1155 NFT कलेक्शन तैयार करता है जो एक लेजिटिमेट टीम का हिस्सा लगे। उसके बाद स्कैमर नकली एसेट्स को एक ऐसे लेजिटिमेट कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसफर कर देता है जिसने पहले भी कोई एयर ड्रॉप किया हो। उसके बाद स्कैमर कई एड्रेसेस को NFTs भेजने के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट का एयर ड्रॉप फंक्शन शुरू कर देता है। रेसिपिएंट्स को धोखा देने के लिए NFT के डिस्क्रिप्शन में एक फिशिंग URL भी दिया जाता है। एक ट्रेडिशनल स्लीप ड्रॉप और इस तरह के स्कैम में यही फर्क है कि इस तरह के स्कैम में फेक रिवॉर्ड के तौर पर NFT दी जाती है। ऐसे में किसी URL वाले ERC20 टोकन से ज्यादा ऑथेंटिक लगता है। हालांकि स्कैमर्स का कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड है, लेकिन वो किसी और अनवेरीफाइड कॉन्ट्रैक्ट से स्कैम एग्जीक्यूट करता है ताकि वो यूजर्स को धोखा दे सके और इस बात पर यकीन दिला सके कि वो एक वेरीफाइड कॉन्ट्रैक्ट के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। इस तरह के स्कैम्स को अंजाम देने के लिए किसी जेन्युइन टोकन की लुक की नकल की जाती है और स्लीप मिंटिंग जैसी तकनीक इस्तेमाल की जाती है। स्कैमर्स ने अब तक यूनिस्वैप, चेनलिंक, लीडो, सर्कल के टोकन्स के साथ स्कैम्स को अंजाम दिया है। ऐसे में इस तरह के स्कैम से बचने के लिए जरूरी है कि यूजर्स सतर्क रहें, जिन कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ वो डील कर रहे हैं उन्हें अच्छी तरह एनालाइज करें। कॉन्ट्रैक्ट का डिप्लॉयर कौन है, कब से ये कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव है, इसकी जांच करें। साथ ही उस टोकन के ऑफिशियल सोशल मीडिया को भी रिव्यू करें। हो सकता है कि असल टीम ने अपने टोकन के साथ चल रहे स्कैम के बारे में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ पोस्ट किया हो। वैसे लीडो के साथ हुए स्लीप ड्रॉप स्कैम के दौरान कंपनी के सोशल मीडिया को भी हैक किया गया था। खैर, ऐसे किसी भी स्कैम में फंसने से बचने के लिए जरूरी है कि आप अपनी तरफ से पूरी जानकारी इकट्ठा कर लें, अपनी तरफ से कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट और सोशल मीडिया चेक कर लें और पूरी तरह से तसल्ली होने के बाद ही किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें। इस खास स्टोरी में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और ऐसी ही मजेदार स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3words.tv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें। Exciting news is coming from the Ethereum staking landscape. Ethereum liquid staking providers have either agreed or are working to impose a self-limit rule in which they promise not to own more than 22% of the Ethereum staking market. This self-limit move will ensure that the Ethereum network remains decentralized. Meta Quest avatars will soon have legs. Meta to launch Horizon Worlds on mobile devices. Walmart to celebrate hip-hop and black culture in Metaverse. Battu Bhai becomes first Gujarati film to venture into Metaverse. Main event launches Metaverse Adventure on Roblox. Want to know more? Watch our weekly show Metaverse Magic every Monday and follow 3.2TV for more such updates. The NFT market has witnessed an 81% drop in monthly trading volume. The whole crypto space has headed towards a bearish side. NFTs are no exception. Not only NFTs, but the Metaverse market is also going through turbulence. Metaverse right now is in the Netscape moment of the internet. It's early days. We need to be patient and wait for technology to evolve. Citibank says we are looking at a potential $13 trillion economy by 2030. NFT की दुनिया में मिकी माउस की एंट्री। पची पेंगुइन्स लेकर आ रही है फैशनेबल क्लोथिंग लाइन और बेस NFTs ने बनाया नया रिकॉर्ड। जानने के लिए देखिए हमारा स्पेशल शो NFT वर्स। ऐसी ही और दिलचस्प खबरों के लिए फॉलो करें 3.2TV।
एनएफटी की दुनिया में पिछले कुछ महीनों से काफी हलचल हो रही है। ओपनसी ने पहली बार अगस्त के महीने में 100 मिलियन से कम की ट्रेडिंग वॉल्यूम दर्ज की। बेस ने लॉन्च से अब तक के बीच करीब 1 मिलियन एड्रेसेस जोड़े हैं। इतना ही नहीं, बेस की डेली ट्रांजैक्शंस के आंकड़े ने पिछले हफ्ते आर्बिट्रम और ऑप्टिमिज्म को भी पीछे छोड़ दिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि बेस पर 68 मिलियन एनएफटीज मिंट की गई हैं। For the past 9 weeks, institutional investors have been plugging cash into the 10th biggest digital asset by market cap, Solana. CoinShares said that $700,000 had been invested over the past week into Sol via crypto investment providers, making the cryptocurrency the most loved altcoin among investors at present. Why are we terming Sol as the most loved altcoin? If you consider year-to-date fund inflows in the protocol, it currently stands at a whopping $26 million. एनएफटी मार्केट भले ही पिछले एक साल से गिरती सेल्स और ट्रेडिंग वॉल्यूम से स्ट्रगल कर रही हो, लेकिन इस बात को भी झुटलाया नहीं जा सकता कि इसी समय के दौरान एनएफटी ने अलग अलग सेक्टर्स में रेवेन्यू अर्निंग और कई तरह की नई अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे भी खोले हैं। ऐसे में जानना जरूरी है कि आखिर किस ब्लॉकचेन पर एनएफटीज बनाना सबसे फायदेमंद है। सही ब्लॉकचेन चुनने से पहले ये देखना जरूरी है कि उस पर ट्रांजैक्शन स्पीड कैसी है, मतलब कितनी तेजी के साथ ट्रांजैक्शन उस पर प्रोसेस और कंफर्म होती हैं। हाई ट्रांजैक्शन स्पीड यानी फास्टर और स्मूदर यूजर एक्सपीरियंस, और कम ट्रांजैक्शन स्पीड यानी ज्यादा वेटिंग टाइम और कंजेशन का खतरा। ट्रांजैक्शन स्पीड सबसे ज्यादा निर्भर करती है कंसेंसस मैकेनिज्म, ब्लॉक साइज और नेटवर्क की कैपेसिटी पर। As promised, we are back with Blink Financial's another game called Bitcoin Pop. Easily available on iOS and Android, Bitcoin Pop offers cryptocurrency rewards while playing. Amigos, you can earn Bitcoin by playing these games, attracting a new generation of casual mobile game enthusiasts. It tasks players with launching colorful bubbles onto the board above with an aim to match at least 3 of a kind, thus clearing them from view. एक वक्त था जब एनएफटीज को महज एक हाई प्राइस प्रोफाइल पिक्चर माना जाता था, जिसकी कोई खास रियल वैल्यू नहीं थी। ऐसे में एनएफटीज की यूटिलिटी क्या है, इसका कोई ठीक ठाक जवाब किसी के पास नहीं था। लेकिन पिछले 2 सालों में एनएफटीज की जैसे काया पलट गई है। आज के दौर में आर्ट और म्यूजिक इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि फिल्म इंडस्ट्री भी एनएफटीज का लोहा मान चुकी है। जी हाँ, फिल्म फंडिंग और फाइनेंसिंग में भी एनएफटीज एक अहम भूमिका अदा कर सकती हैं, और वो है क्राउड फंडिंग के जरिए। दूसरी तरफ किसी फिल्म प्रोजेक्ट में कितने पार्टनर्स हैं, किसका कितना शेयर या ओनरशिप है, उसका रिकॉर्ड भी एनएफटीज के तौर पर रखा जा सकता है, जो ब्लॉकचेन पर हमेशा सिक्योर रहेगा। Sustainability-focused man-made cellulosic fibers producer बिरला सेल्यूलोस ने अपनी सस्टेनेबिलिटी क्रेडेंशियल्स के साथ साथ ब्रांड और कंज्यूमर कनेक्ट को मजबूत करने के लिए टेक्सटाइल जेनेसिस के साथ पार्टनरशिप की है। कंपनी ने कहा है कि वह टेक्सटाइल जेनेसिस के ब्लॉकचेन एनेबल्ड डिजिटल ट्रेसेबिलिटी प्लेटफॉर्म का लाभ उठाएगी, जो कि एंड कंज्यूमर को टेक्सटाइल वैल्यू चेन में ट्रांसपेरेंसी प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण टूल है। Have you ever imagined yourself without legs? Well, such a scenario prevailed in reality for MetaQuest's avatars sporting a without leg look, which enabled them to float in the air. The social media company spent millions of dollars into the virtual world and became a laughing stock in the world. Mark Zuckerberg has finally realized that legs are an important part of the body. Guess what? All MetaQuest avatars will soon have legs.
I'm sure you want to know more about Meta's virtual reality projects. I have many more exciting updates for you, all from the metaverse space. Hello and welcome to 3.0 TV. I am Vishakha Thakur and you are watching a special show, Metaverse Magic. Metaverse became a buzzword ever since Facebook rebranded itself to Meta. Since 2021, Mark Zuckerberg has been bullish about the metaverse despite losing billions of dollars. Meta is trying its level best to engage more users in the virtual space. And now, the tech giant plans to finally make the Quest avatars appear fully formed, of course by giving them legs. This can be seen becoming a reality by September 27, 2023 during Meta's annual VR Connect. Also, Mark Zuckerberg is back with another fascinating scheme to entice more users to the metaverse division of Meta, Horizon Worlds. Meta has geared up to launch Horizon Worlds on mobile devices. Yes, getting into Meta's virtual world will be that easy now. Meta has recently launched a beta test for Horizon Worlds on mobile devices. In case you are wondering about how it will work on mobile phones, let me tell you that Horizon Worlds on mobile will work similarly to game apps, with users being able to manage their avatar on screen and communicate with VR players. With the launch of Horizon Worlds on mobiles, many more people will be able to participate in Meta's advanced digital environment, which will eventually become the foundational space of its next-level social interaction push. After back-to-back 2 updates on Meta, it's time to do a quick check on other developments. Metaverse has been creating its magic everywhere by providing immense opportunities, and nobody wants to miss the boat. Luxury brands from Louis Vuitton to Gucci, tech giants from Meta to Microsoft, countries from UAE to China and many others have all joined the Metaverse bandwagon. Now, Walmart too is testing the waters of Metaverse. In order to celebrate the 50th anniversary of hip-hop, Walmart is partnering with a Web3 creative studio, People of Crypto Lab, to launch a gamified experience, Culture Wars, on the spatial Metaverse platform. Well, Walmart aims to pay tribute to the hip-hop's early visionaries and broaden access to technology for Black creators. And now, let's listen in to what Mr. Sharad Agarwal has to say about the applications of Metaverse in different industries. So let me start by talking about the airlines. They are quite new to the industry in terms of, establishing a presence in the metaverse. I'd like to give you the example of Dubai's airline, Emirates, which is world-class, world-famous, and they have taken the plunge to create a training module for 4,000 crew members that have recently been hired since COVID. And all of them will be trained in the metaverse. This is a great application because in early days, people had to travel to Dubai, stay here for a few months, and then train in a classroom environment. Now they can train from wherever they are in any part of the world. Well, the film industry too is trying to foray into the metaverse. A Gujarati film titled Bachchu Bhai, starring Siddharth Randevia, has become the first Gujarati film to foray into metaverse. The film, produced under the banner of Geo Studios and SP Cinecorp, has joined the metaverse bandwagon. The film's trailer launch and a meet and greet was organized on the Party Night Metaverse. The event received overwhelming response from the attendees, which emphasized the growing significance of metaverse in the entertainment world. The fans were super excited as they could see the actor from such vicinity and also got to interact with him. Sharat Patel, producer of the film, presided over the question and answer session. And now, an interesting update for all Roblox users. One of the fastest growing family entertainment brands, The Main Event, is entering the metaverse. Yes, The Main Event has launched The Main Event World on Roblox. The platform aims to connect people to bowling and laser tag experiences in the metaverse with an in-center deal on free gameplay. So prepare for heart-pounding excitement in laser tag with a variety of settings and maps. Together with pals, you can engage in fast-paced first-person laser combat as you pursue the ultimate triumph. Well, users can alter the experience by letting other people decide how challenging the role will be. The new bowling experience promises countless hours of fun and fellowship for everyone, whether you play in public servers or with your favorite groups.
That's all in this episode of Metaverse Magic. I will be back with more such interesting updates from the Metaverse space. Do like, share and subscribe to our channel. And for more such interesting updates, please log on to our website www.3worstv.io or scan the QR code. This is me, Vishakha Thakur, signing off. वेलकम टू द पेट मेटावर्स। हेलो, हाँ, मैंने कहा था ना पेनी को वॉक पे लेके जाने वाली हूँ, बस वही हूँ। तो आ जाओ, घर आ जाओ। अरे बाबा, मैं घर पर भी हूँ और पार्क में भी। अरे नहीं नहीं, पागल नहीं बना रही हूँ, सच में पेट मेटावर्स की दुनिया में सब पॉसिबल है। अच्छा चलो, तुम घर आओ, फिर समझाती हूँ। ओके बाय। चलो पेनी, बाद में मिलते हैं, घर पर गेस्ट आ रहे हैं। See you later. ये जो आपने देखा डिजिटल वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में इन एंड आउट, स्पेशली फॉर पेट लवर्स, ये सच में हो सकता है। जी हाँ, पेट पर जान छिड़कने वालों से लेकर उनकी किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बिना उठाए उन्हें पसंद करने वालों तक के लिए मेटावर्स ने बनाई है एक नई दुनिया। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं पेट मेटावर्स के सबसे अमेजिंग फीचर के बारे में। रियल वर्ल्ड में पेट एनिमल्स के ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है। डॉग्स, कैट्स, बर्ड्स, हॉर्सेस और कोई सिरफिरा हो तो शेर पाल लेगा। लेकिन मेटावर्स में आप जिस किसी भी एनिमल को चाहे अपना पेट बना सकते हैं। इतना ही नहीं, मेटावर्स की दुनिया में आप अपने पेट को खुद डिजाइन भी कर सकते हैं। जरा सोचिए, व्हाट ऑल यू कैन डू विद योर इमेजिनेशन। अगर आपको जुरासिक पार्क का डायनासोर पालना हो या फिर गेम्स ऑफ थ्रोन्स की खलीसी की तरह ड्रैगन्स का शौक हो, तो आप पेट मेटावर्स में ये सब कुछ चुटकी बजाते ही कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप अपने पसंदीदा कार्टून कैरेक्टर जैसे द जंगल बुक के बगीरा, बल्लू से लेकर खूंखार से लगने वाले शेर खान तक को भी अपना पेट बना सकते हैं। अब पेट मेटावर्स की दुनिया में जाने के लिए आपके पास एक दो नहीं बल्कि 4 ऑप्शंस है, जिसमें मेटापेट, मेटागोची, एक्सी इन्फिनिटी और पॉपुलर क्रिप्टोक्रिटीज का नाम शामिल है। इन चारों प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लोर करिए और बिगिन योर जर्नी इनटू पेट मेटावर्स राइट नाउ। पेट मेटावर्स के साथ लोगों के जुड़ाव का एक बहुत ही स्वीट और इमोशनल रीजन भी है। अगर आप अपने प्यारे पेट को खो चुके हैं और आप चाहकर भी उसकी यादों से खुद को अलग नहीं कर पा रहे हैं, तो इस दुनिया में ना सही लेकिन मेटापेट की दुनिया में आप अपने लॉन्ग लॉस्ट पेट को क्रिएट करके उसे नया डिजिटल अवतार दे सकते हैं और उसके साथ मेटावर्स में वो हर चीज कर सकते हैं जो आप रियल लाइफ में उसके साथ किया करते थे। इतना ही नहीं, आप रियल वर्ल्ड की तरह ही पेट कंपटीशन में भाग लेने से लेकर अपनी डिजिटल पेट कम्युनिटी क्रिएट कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म की खास बात यह है कि आप पेट के लिए रेवेन्यू जनरेट करने से लेकर उन्हें ड्रेस, ट्रेन और ब्रीड भी कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी पेट एलर्जी के। वहीं मेटागोची प्लेटफॉर्म पर आप अपने बच्चों की पेट रखने की ख्वाहिशें या फिर कहें जिद को भी पूरा कर सकते हैं। जबकि पेट्स को लेकर गेम खेलने का शौक रखने वाले पेट लवर्स खेल खेल में एक्सी इन्फिनिटी मेटावर्स प्लेटफॉर्म पर वर्चुअल ब्रीडिंग के जरिए नेक्स्ट लेवल पर जा सकते हैं। अगर आप कैट लवर हैं या कैट से प्यार करते हैं, तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्रिप्टो किटीज ही वो सही जगह है जहां आप अलग अलग कैट्स को बाय, कलेक्ट और ब्रीड कर सकते हैं। आज की स्टोरी के बाद मुझे यकीन है कि आप सभी अपने पसंदीदा पेट को डिजाइन करने के लिए बहुत उतावले हो रहे होंगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? स्टार्ट योर पेट मेटावर्स जर्नी नाउ। मैं तो जा रही हूँ अपने पेट मेटावर्स में पेनी के साथ खेलने। आई थिंक शी इज मिसिंग मी। अभी तो मैं पेट मेटावर्स जा रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं आपकी होस्ट और दोस्त रुचि शर्मा मेटावर्स से जुड़ी ऐसी ही कोई अलग, अद्भुत, एडवेंचरस और अमेजिंग दुनिया लेकर आपसे फिर मिलूंगी।
तब तक के लिए देखते रहिए 3.TV और ऐसे ही दिलचस्प अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉगिन करें या फिर QR कोड को स्कैन करें। तो फिलहाल मैं तो चली, लेकिन प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, वरना फैनी को आपके पीछे छोड़ दूंगी। बाय बाय। Hello and welcome to 3.TV. I am your host Vishakha Thakur. Of late, we have observed pickup in institutional activity in virtual digital assets after the US Federal Court mandated the SEC to revisit its prior rejection of Grayscale's bid to convert its BTC trust into spot ETF. JP Morgan Chase & Company, Universal Bank and Financial Services is actively exploring options in this space. As per recent media reports, the New York headquartered company is in the early phases of exploring a blockchain-based digital deposit token. The aim is to expedite cross-border payments and settlements. According to Bloomberg report, the US-based bank has laid the groundwork for the necessary infrastructure for this innovative payment method. However, the creation of the token hinges on obtaining approval from regulatory authorities in the US. In a sense, deposit tokens are digital coins that represent a deposit claim against a commercial bank, mirroring the deposits held by customers in their accounts. Transactions involving these tokens are processed on blockchain technology, resulting in instantaneous settlement. Advocates of this emerging form of digital currency also argue that it could potentially reduce transaction costs. The bank had previously tested issuing deposit tokens in a single transaction in 2022 as part of the Monetary Authority of Singapore's Project Guardian and underscored the potential of this form of currency in a recent study. Bloomberg reports that this move signifies an expansion of JP Morgan's blockchain initiatives, which have been at the forefront of Wall Street's efforts to leverage blockchain technology to streamline certain cumbersome banking processes. In addition to this initiative, JP Morgan has already developed several applications utilizing blockchain technology, including JPM Coin, which was introduced in 2019. JPM Coin facilitates the movement of dollars and euros among certain JP Morgan corporate clients within the financial institution. The bank reported in June 2023 that it had processed approximately $300 billion in transactions through the system since its launch. To put this in perspective, JP Morgan handles $10 trillion in US dollar transactions per day. Coming back to JPM Coin and understanding its difference with deposit tokens, one must know that a digital deposit token could be employed to easily transfer funds to clients of other banks. Further, it is well suited for settling trades involving tokenized securities or financial instruments issued on a blockchain. Much like JPM Coin, its infrastructure would integrate with the bank's existing compliance systems, ensuring compliance with Know Your Customer, anti-fraud, and other essential checks, as well as regulatory reporting. On that note, it's time to end this special update, but do keep watching 3.TV for interesting news from the Web3 space. Thanks for watching. This is me, Vishakha Thakur, signing off. एक वक्त था जब NFTs को महज एक हाई प्राइस प्रोफाइल पिक्चर माना जाता था, जिसकी कोई खास रियल वैल्यू नहीं थी।
ऐसे में एनएफटीज की यूटिलिटी क्या है, इसका कोई ठीक ठाक जवाब किसी के पास नहीं था। लेकिन पिछले 2 सालों में एनएफटीज की जैसे काया पलट गई है। आज के दौर में आर्ट और म्यूजिक इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि फिल्म इंडस्ट्री भी एनएफटीज का लोहा मान चुकी है। Thomas, you seem particularly triggered right now. Can you tell me what happened? I've had dreams that weren't just dreams. तो 2021 में आई वार्नर ब्रदर्स की फिल्म द मैट्रिक्स ने ये भली भांति प्रूव कर दिया है। मैट्रिक्स ने एनएफटीज के जरिए $5 मिलियन की भारी कमाई की। इस फिल्म से इंस्पायर्ड एनएफटीज को फिल्म रिलीज से पहले बेचा गया था। इससे फिल्म के लिए अच्छी खासी एक्साइटमेंट क्रिएट हुई, फिल्म प्रमोशन हुआ और साथ ही रिलीज से पहले ही फिल्म ने कमाना भी शुरू कर दिया। और तो और अब वार्नर ब्रदर्स को अपनी फिल्मों की एनएफटीज रिलीज करने का चस्का सा लग गया है। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, गेम ऑफ थ्रोन्स के बाद वार्नर ब्रदर्स ने तमाम सुपर हीरोज जैसे सुपरमैन, बैटमैन, वंडर वुमन, फ्लैश और एक्वामैन की एनएफटीज तक रिलीज की। 2021 में ही हॉलीवुड की देखा देखी बॉलीवुड के सितारों ने भी एनएफटीज को कैश करने की कोशिश की। जाहिर है सबसे कामयाब रहे सदी के शहंशाह अमिताभ बच्चन। कौन हो तुम? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। बिग बी ने अपने बाबूजी के मशहूर कविता संग्रह मधुशाला के साथ साथ अपनी फिल्म के पोस्टर्स और अनसीन पिक्चर्स की एनएफटीज के जरिए 7 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। बच्चन के अलावा कमल हसन, तापसी पन्नू, सनी लियोनी जैसी कई फिल्मी हस्तियां एनएफटीज से अच्छी खासी कमाई कर चुकी हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में एक एनएफटी फंडेड फिल्म भी बन चुकी है। एक्टर विशाल मल्होत्रा, जिन्हें आप उनकी डिज्नी शो विक्की और वेताल और फिल्म इश्क विश्क में उनके सपोर्टिंग रोल के लिए जानते होंगे, विशाल ने इल्म नाम की एक शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट की है जिसे पूरी तरह से एनएफटी से फंड रेज करके बनाया गया है और इसे रिलीज किया गया ओटीटी पर। जी हाँ, फिल्म फंडिंग और फाइनेंसिंग में भी एनएफटीज एक अहम भूमिका अदा कर सकती हैं और वो है क्राउड फंडिंग के जरिए। यानी अगर आपके पास एक अच्छी कहानी है जिसे आप बड़े पर्दे पर उतारना चाहते हैं तो आपको किसी प्रोड्यूसर की जरूरत नहीं है। एनएफटीज की मदद से आप क्राउड फंडिंग कर सकते हैं और तो और आप अपनी फिल्म के क्रू से ही फंड रेज कर सकते हैं, फिर वो मेकअप आर्टिस्ट हो या फिर कॉस्ट्यूम डिजाइनर ही क्यों ना हो। क्राउड फंडिंग करने वाली पूरी टीम आपकी फिल्म को हिट कराने के लिए जी जान लगा देगी। इसके बदले जब तक फिल्म बन रही है क्रू अपनी एनएफटीज को स्टेक कर सकता है या ज्यादा कीमत पर बेच सकता है या फिर फिल्म रिलीज के बाद उसके बॉक्स ऑफिस सक्सेस से कमाए गए प्रॉफिट को एंजॉय कर सकता है। दूसरा फायदा कॉपीराइट और ओनरशिप राइट्स का है, यानी कॉपीराइट सर्टिफिकेट्स की एनएफटी बनेगी तो इसका वैलिड रिकॉर्ड रहेगा। दूसरी तरफ किसी फिल्म प्रोजेक्ट में कितने पार्टनर्स हैं, किसका कितना शेयर या ओनरशिप है, उसका रिकॉर्ड भी एनएफटीज के तौर पर रखा जा सकता है जो ब्लॉकचेन पर हमेशा सिक्योर रहेगा। एनएफटीज की मदद से फिल्म इंडस्ट्री को ओनरशिप, कॉपीराइट्स, फंड रेजिंग और प्रमोशन में अच्छा खासा फायदा हो सकता है। फाइनेंस न मिलने की वजह से जिन प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के फिल्म प्रोजेक्ट्स सालों तक ठंडे बस्ते में पड़े रहते थे और ऐसे स्ट्रगलिंग एक्टर्स जो बड़े पर्दे पर चमकने के सपने देख रहे होते हैं, उनके लिए भी फिल्म एनएफटीज अब आशा की किरण बनकर उभरी है। एक और अहम फायदा है फिल्म प्रमोशन को लेकर। आमतौर पर फिल्म प्रोड्यूसर अपनी मूवी को प्रमोट करने के लिए लाखों रुपए खर्चते हैं, लेकिन एनएफटीज के साथ आप अपनी फिल्म को कम खर्चे पर प्रमोट कर सकते हैं और उससे कमा भी सकते हैं, जैसे कि फिल्म के पोस्टर्स, सीन, सॉन्ग्स, बिहाइंड द सीन, डायलॉग्स, ऑडियो क्लिप्स और मर्चेंडाइज की एनएफटीज बेचकर फिल्म प्रमोशन के साथ साथ अच्छी खासी कमाई की जा सकती है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि एनएफटीज फिल्म इंडस्ट्री को बदल रही हैं और इसमें कई नए आयाम खोल रही हैं। ऐसे में एनएफटीज की ताकत से कितने उभरते डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स के सपने सिल्वर स्क्रीन पर चमकते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। इस खास स्टोरी में फिलहाल इतना ही। ऐसी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज मैं रुचि शर्मा आपके लिए लाती रहूंगी। आप देखते रहिए 3.0 टीवी और ऐसी ही मजेदार स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3worldstv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।
Franklin Templeton, the financial giant on the Wall Street, is the latest entrant in the race of launching Bitcoin's spot exchange-traded fund, which would hold the cryptocurrency as underlying asset and track its price. Franklin Templeton, which is one of the world's largest asset managers handling around $1.4 trillion, filed the application with the US Securities and Exchange Commission on Tuesday. The asset manager's application follows the SEC earlier this month delaying its decision on several such ETF applications, including from BlackRock, WisdomTree, Fidelity, and others. The product would be called the Franklin Bitcoin ETF and would be a series within the Franklin Templeton Digital Holdings Trust, according to the application. It added that its shares would be listed and traded on the CBOE BZX exchange and that America's largest cryptocurrency exchange, Coinbase, would be fund's custodian. San Francisco-based Coinbase has been chosen by other Bitcoin ETF applicants as the would-be fund's custodian and surveillance sharing partner. This means Coinbase would share information about trading, clearing activity, and customer identification to reduce the risk of market manipulation as well as take care of the storage of the Bitcoin backing the fund's shares. Meanwhile, the SEC's next deadline to respond to an application is October 16th. However, it can again choose to delay. Sam Bankman-Fried, the founder of FTX, will have to continue putting up his case while inside after a US federal judge denied his request for a temporary release. In rejecting Bankman-Fried's several applications for a pre-trial release, Judge Lewis Kaplan found on Tuesday that the former FTX CEO was in a predicament of his own creating. After his arrest, Bankman-Fried was given a bond release. However, the Southern District of New York Court withdrew that release last month after concluding that the defendant had attempted to obstruct witnesses on at least 2 separate occasions. Two of Bankman-Fried's attorneys, Mark Cohen and Kristen Everdell, contended in both written submissions and a virtual hearing that he needed to have access to discovery documents that were primarily only available through online databases and to participate in a collaborative document outlining his work. The court expressed his skepticism in his ruling, stating that neither Bankman-Fried nor any other defendant has a right to review each and every item of provided information. Defendant is represented by a substantial team of extremely able written lawyers, he wrote. Arguments that Bankman-Fried needed more time each day to concentrate on his defense did not convince him either. The court approved the request of the prosecution and defense for a September or October trial date. The trial is now scheduled to start on October 3rd, but the defense team has the opportunity to ask for a postponement, the judge said. According to 2 persons with the knowledge of the situation, London-based HSBC, one of the biggest banks in the world, is collaborating with Bitcoin custody technology company Fireblocks. Fireblocks has expertise dealing with major institutions and specializes in Bitcoin safeguarding technologies like multi-party computation. Early in 2021, BNY Mellon and BNP Paribas both chose Fireblocks as their custody technology vendor of choice. The regulatory ambiguity surrounding digital assets has tempered the large banks' excitement for cryptocurrencies. This is especially true given the scenario in the United States where regulators are engaged in a legal battle with cryptocurrency businesses. Financial institutions in regions like Europe and Asia may have an edge over the American counterparts due to this lack of transparency. HSBC, which holds about $3 trillion in assets, lets customers of its Hong Kong branch trade in Bitcoin and Ethereum exchange-traded funds. In July, the HSBC-owned Hang Seng Bank, also in Hong Kong, stated that while approved crypto firms can create a bank account, they will only be able to receive a simple one. Despite this, the bank still appears to be somewhat wary about cryptocurrencies, at least publicly. That's it in today's special segment. For more such updates, follow 3.0 TV or log on to our website www.3versetv.io or scan the QR code to know more.
Mark Zuckerberg is back with another fascinating scheme to entice more users to the metaverse division of Meta, Horizon Worlds. He has been bullish about the metaverse since rebranding Facebook to Meta in 2021. The journey has not been an easy one, with Meta's Reality Labs losing $21 billion in only 18 months. Well, Meta is refusing to give up on its dream project, despite suffering enormous losses, even Mark's avatar being a laughing stock on social media platforms and being chastised for fueling the so-called metaverse hype. Adding another feather to its cap, Meta is all set to launch Horizon Worlds on mobile devices. Yes, getting into Meta's virtual world will be that easy now. Meta has recently launched a beta test for Horizon Worlds on mobile devices. Have a look at this video. Now, if you are wondering about how it will work on mobile phones, let me tell you that Horizon Worlds on mobile will work similarly to game apps, with users being able to manage their avatar on screen and communicate with VR players. Though the VR avatars don't yet have legs, an ongoing source of concern mobile players do, Meta is still ironing out some of the display bugs and variations. With the launch of Horizon Worlds on mobile, many more people will be able to participate in Meta's advanced digital environment, which will eventually become the foundational space of its next-level social interaction push. Meta's ambition is that users will soon engage in all new ways with their avatars for an increasing number of activities, ushering in the larger metaverse experience and encouraging increased VR take-up. And with the release of its next-generation Quest 3 headset on the Horizon mobile app may see a wider rollout at exactly the perfect time. Well, that's all in this story. Do like, share and subscribe to our channel. And for more such updates, log on to our website www.3versetv.io or scan the QR code. This is me, Vishakha Thakur, signing off. एक वक्त था जब NFTs को महज एक हाई प्राइस प्रोफाइल पिक्चर माना जाता था, जिसकी कोई खास रियल वैल्यू नहीं थी। ऐसे में NFTs की यूटिलिटी क्या है, इसका कोई ठीक ठाक जवाब किसी के पास नहीं था। लेकिन पिछले 2 सालों में NFTs की जैसे काया पलट गई है। आज के दौर में आर्ट और म्यूजिक इंडस्ट्री ही नहीं, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री भी NFTs का लोहा मान चुकी है। Thomas? You seem particularly triggered right now. Can you tell me what happened? I've had dreams that weren't just dreams. तो 2021 में आई वार्नर ब्रदर्स की फिल्म द मैट्रिक्स ने ये भली भांति प्रूव कर दिया है। मैट्रिक्स ने NFTs के जरिए $5 मिलियन की भारी कमाई की। इस फिल्म से इंस्पायर्ड NFTs को फिल्म रिलीज से पहले बेचा गया था। इससे फिल्म के लिए अच्छी खासी एक्साइटमेंट क्रिएट हुई, फिल्म प्रमोशन हुआ और साथ ही रिलीज से पहले ही फिल्म ने कमाना भी शुरू कर दिया। और तो और अब वार्नर ब्रदर्स को अपनी फिल्मों की NFTs रिलीज करने का चस्का सा लग गया है। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, गेम ऑफ थ्रोन्स के बाद वार्नर ब्रदर्स ने तमाम सुपर हीरोज जैसे सुपरमैन, बैटमैन, वंडर वुमन, फ्लैश और एक्वामैन की NFTs तक रिलीज की। 2021 में ही हॉलीवुड की देखा देखी बॉलीवुड के सितारों ने भी NFTs को कैश करने की कोशिश की। जाहिर है सबसे कामयाब रहे सदी के शहंशाह अमिताभ बच्चन। कौन हो तुम? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। बिग बी ने अपने बाबूजी के मशहूर कविता संग्रह मधुशाला के साथ साथ अपनी फिल्म के पोस्टर्स और अनसीन पिक्चर्स की NFTs के जरिए 7 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। बच्चन के अलावा कमल हसन, तापसी पन्नू, सनी लियोनी जैसे कई फिल्मी हस्तियां NFTs से अच्छी खासी कमाई कर चुकी हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में एक NFT फंडेड फिल्म भी बन चुकी है।
एक्टर विशाल मल्होत्रा, जिन्हें आप उनकी डिज्नी शो विकी और वेताल और फिल्म इश्क विश्व में उनके सपोर्टिंग रोल के लिए जानते होंगे, विशाल ने इल्म नाम की एक शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट की है, जिसे पूरी तरह से NFT से फंड रेज करके बनाया गया है और इसे रिलीज किया गया OTT पर। जी हाँ, फिल्म फंडिंग और फाइनेंसिंग में भी NFTs एक अहम भूमिका अदा कर सकती हैं, और वो है क्राउड फंडिंग के जरिए। यानी अगर आपके पास एक अच्छी कहानी है जिसे आप बड़े पर्दे पर उतारना चाहते हैं, तो आपको किसी प्रोड्यूसर की जरूरत नहीं है। NFTs की मदद से आप क्राउड फंडिंग कर सकते हैं, और तो और आप अपनी फिल्म के क्रू से ही फंड रेज कर सकते हैं, फिर वो मेकअप आर्टिस्ट हो या फिर कॉस्ट्यूम डिजाइनर ही क्यों ना हो। क्राउड फंडिंग करने वाली पूरी टीम आपकी फिल्म को हिट कराने के लिए जी जान लगा देगी। इसके बदले जब तक फिल्म बन रही है, क्रू अपनी NFTs को स्टेक कर सकता है या ज्यादा कीमत पर बेच सकता है, या फिर फिल्म रिलीज के बाद उसके बॉक्स ऑफिस सक्सेस से कमाए गए प्रॉफिट को एंजॉय कर सकता है। दूसरा फायदा कॉपीराइट और ओनरशिप राइट्स का है, यानी कॉपीराइट सर्टिफिकेट्स की NFT बनेगी तो इसका वैलिड रिकॉर्ड रहेगा। दूसरी तरफ किसी फिल्म प्रोजेक्ट में कितने पार्टनर्स हैं, किसका कितना शेयर या ओनरशिप है, उसका रिकॉर्ड भी NFTs के तौर पर रखा जा सकता है, जो ब्लॉकचेन पर हमेशा सिक्योर रहेगा। NFTs की मदद से फिल्म इंडस्ट्री को ओनरशिप, कॉपीराइट्स, फंड रेजिंग और प्रमोशन में अच्छा खासा फायदा हो सकता है। फाइनेंस न मिलने की वजह से जिन प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के फिल्म प्रोजेक्ट्स सालों तक ठंडे बस्ते में पड़े रहते थे, और ऐसे स्ट्रगलिंग एक्टर्स जो बड़े पर्दे पर चमकने के सपने देख रहे होते हैं, उनके लिए भी फिल्म NFTs अब आशा की किरण बनकर उभरी है। एक और अहम फायदा है फिल्म प्रमोशन को लेकर। आमतौर पर फिल्म प्रोड्यूसर अपनी मूवी को प्रमोट करने के लिए लाखों रुपए खर्चते हैं, लेकिन NFTs के साथ आप अपनी फिल्म को कम खर्चे पर प्रमोट कर सकते हैं और उससे कमा भी सकते हैं, जैसे कि फिल्म के पोस्टर्स, सीन, सॉन्ग्स, बिहाइंड द सीन, डायलॉग्स, ऑडियो क्लिप्स और मर्चेंडाइज की NFTs बेचकर फिल्म प्रमोशन के साथ साथ अच्छी खासी कमाई की जा सकती है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि NFTs फिल्म इंडस्ट्री को बदल रही हैं और इसमें कई नए आयाम खोल रही हैं। ऐसे में NFTs की ताकत से कितने उभरते डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स के सपने सिल्वर स्क्रीन पर चमकते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। इस खास स्टोरी में फिलहाल इतना ही। ऐसी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज मैं रुचि शर्मा आपके लिए लाती रहूंगी। आप देखते रहिए 3.TV और ऐसी ही मजेदार स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3worldstv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें। Rewind time. Blink Financial Games has a lot of other jests like a Bitcoin Blast, Bitcoin Food Fight, Bitcoin Pop. We will definitely cover the gameplays of these games. As promised, we are back with Blink Financial's another game called Bitcoin Pop. Just in case if you forgot, Blink Financial is a mobile game developer. It specializes in developing casual puzzle games. The games are blockchain based. The games developed by the company are Bitcoin Blast and Bitcoin Blocks. I know you're keen to play this game. What is this game about and what are the rewards? Let's not faff around and start with the gameplay. Bubble shooter games are popular since Taito's Puzzle Bobble or a Bubble Dragon attracted a new generation of casual mobile fans. Easily available on iOS and Android, Bitcoin Pop offers cryptocurrency rewards while playing. Amigos, you can earn Bitcoin by playing these games, attracting a new generation of casual mobile game enthusiasts. Hailing from Blink Financial, a company with numerous play-to-earn mobile games, Bitcoin Pop delivers a relatively straightforward rendition of the tried and true bubble shooter format. It tasks players with launching colorful bubbles onto the board above with an aim to match at least 3 of a kind, thus clearing them from view. Often, the goal to finish a level is to clear a certain number of special soda bubbles using a limited number of shots. Power-ups and other twists emerge along the way,
to shake things up. But otherwise, this is a pretty standard ripoff of the genre. You guys, you have to play this game for a long period of time. For example, if you play this game for like 2-3 hours, you'll get 0.000233 bitcoins or 233 satoshis, which is $0.06 worth of points, which can be converted into Bitcoin or Ethereum, sent to a Coinbase account or cash out via PayPal in US dollars. The game is filled with lengthy video ads that take most of the screen space after each level, consuming nearly as much time as watching ads. These ads often include scammy looking ads promising to pay thousands of dollars for playing other mobile games. How do we know what ads are spam, what is genuine, and like what to do in such situations? What if I tell you that you can earn while learning about crypto scams? SwiftX, an Australian cryptocurrency exchange with 660,000 users, plans to start an educational program. The company claims that the surge in demand for crypto education during the bear market was the cause. The cryptocurrency exchange SwiftX is introducing Earn and Learn educational program. This program aims to inspire people by offering rewards for completing training on various Bitcoin frauds. Additionally, instructional platforms delivering rewards in the form of cryptocurrencies have been created by Coinbase and Binance. Users who successfully complete brief courses about these assets are offered alternative cryptocurrencies including ZRX, ZTX, GRT, and COMP through Coinbase's Coinbase Earn program. The Academy platform on Binance also provides ways to make money using cryptocurrencies. Earning currency that has real-world value while having fun is one of the main reasons why play-to-earn games have become so popular. Don't worry, just in case you miss out with such amazing, interesting gaming updates, 3.0 TV will keep you updated. So keep watching 3.0 TV. Don't forget to like, share and subscribe to our YouTube channel. Do press the bell icon for more such updates. And do log on to our website at www.3versetv.io or scan the QR code to know more. जस्टिन बीबर के फेमस ट्रैक की बनेगी NFT। बदलेगा NFTs का वक्त G-Shock वर्चुअल वॉचेस के साथ। और फूड वर्स में घुला बर्गर्स और रैप्स की NFT का जायका। हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जस्टिन बीबर के हिट गाने की NFT से लेकर बर्गर्स की NFT तक कई मजेदार NFT अपडेट्स मैं रुचि शर्मा आपके लिए लेकर आई हूँ। तो हो जाइए NFT वर्स के इस खास एपिसोड के लिए तैयार। इसमें आपके फेवरेट NFT प्रोजेक्ट्स की डिटेल तो होगी ही, साथ ही हम स्पेशल गेस्ट के साथ मुलाकात भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं पिछले हफ्ते कैसा रहा NFT मार्केट का हाल। क्रिप्टो स्लैम के डेटा के मुताबिक पिछले हफ्ते NFTs की सेल्स वॉल्यूम 6.75% गिरकर $80.69 मिलियन पर रही। NFT सेल्स वॉल्यूम में गिरावट लगातार 4 हफ्तों में देखी जा रही है। इतना ही नहीं, NFT ट्रांजैक्शन वॉल्यूम भी 4.33% गिरी, लेकिन NFT बायर्स के आंकड़े में 17.77% बढ़त देखी गई, जो 569,407 पर रही। NFT सेल्स वॉल्यूम में गिरावट लगातार 4 हफ्तों से देखी जा रही है। इतना ही नहीं, NFT ट्रांजैक्शन वॉल्यूम भी 4.33% गिरी, लेकिन NFT बायर्स के आंकड़े में 17.77% बढ़त देखी गई, जो 569,407 पर रही। हर हफ्ते की तरह इस बार भी इथेरियम NFT सेल्स में लीड कर रहा था। सितंबर के पहले हफ्ते इथेरियम NFT सेल्स 12.11% की गिरावट के साथ $42.61 मिलियन रही। NFT सेल्स की टॉप 5 लिस्ट में दूसरे पायदान पर थी माइथोस, जिसकी सेल में 25.27% की बढ़त देखी गई। तीसरे पायदान पर 7.21% की बढ़त के साथ रही पॉलीगॉन, तो वहीं चौथे स्थान पर 5.58% की गिरावट के साथ थी सोलाना NFT। 5वें स्थान पर रही इम्यूटेबल एक्स, जिसमें 17.5% की सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई।
इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं हमारे स्पेशल गेस्ट निखिल मात्रे का। एनएफटी सेल्स वॉल्यूम पिछले 4 हफ्तों से लगातार गिर रही है। इतना ही नहीं, एनएफटी ट्रांजैक्शन वॉल्यूम में भी गिरावट देखी जा रही है, लेकिन एनएफटी बायर्स की जो आंकड़े हैं उसमें थोड़ा उछाल देखा गया है। क्या है इसके पीछे की वजह और इसका क्या इम्पैक्ट होगा ओवरऑल एनएफटी मार्केट पर? So the NFT market crashed due to 3 major reasons. Number 1 is market saturation. So before the 2021 NFT boom, only a few projects, Web3 projects were trading. With the surge in the collectors' interest, the number of projects multiplied. At one point in time, there were 1.5 million NFTs which were trading, right, in a single month in 2021. This led to market saturation. And the supply actually surpassed even the collector's demand. Second reason I think is crypto and NFT scams. The unregulated nature of NFT space made it susceptible to hacking and scams. People lost assets, because of malicious links, because of free mint NFT scams shortly after the NFT boom. Even community chats were compromised with the first Discord hacks. Right, so efforts to pursue scammers by companies like Zack, XBT were not sufficient to ensure true safety. This actually caused the collectors to stop investing in NFTs altogether and leave the space altogether. Third major reason is the collapse of big systems. So the expansion of NFT relied on major Web3 related systems. The collapse of systems had a very, very significant impact on the industry. So these are some of the reasons why I feel there was an NFT market crash. थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। जस्टिन बीबर के फैंस के लिए एक अच्छी खबर है। अब वो जस्टिन की म्यूजिक को एंजॉय करने के साथ साथ उनके गाने की एनएफटी के जरिए उस पर रॉयल्टी अर्न कर सकते हैं। है ना एकदम कमाल की खबर। 2015 में रिलीज हुए जस्टिन बीबर के फेमस सॉन्ग कंपनी की बन रही है एनएफटी। ब्लॉकचेन सेंट्रिक म्यूजिक टेक प्लेटफॉर्म अनदर ब्लॉक और सॉन्ग के को प्रोड्यूसर जो एक्सीडेंट नाम से मशहूर हैं, मिलकर कंपनी ट्रैक की 2000 एनएफटीज लॉन्च कर रहे हैं। आपको बता दें कि अनदर ब्लॉक पहले भी कई वेब3 वेंचर्स पर काम कर चुका है और वो भी म्यूजिक इंडस्ट्री के बड़े बड़े सितारों जैसे कि द वीकेंड, रियाना और मार्टिन गैरिक्स के साथ। खैर मजेदार बात तो ये है कि इस सॉन्ग एनएफटी को खरीदने वाले जस्टिन बीबर के फैंस को गाने की फ्यूचर स्ट्रीम से 1% रॉयल्टी शेयर मिलेगा, जो अपने आप में बेहद अनोखा है, क्योंकि इससे पहले कभी किसी सॉन्ग एनएफटी को खरीदने पर बायर्स को फ्यूचर स्ट्रीम्स पर रॉयल्टी नहीं दी गई है। जब ये ट्रैक पहली बार लॉन्च हुआ था तो ऐसा जबरदस्त हिट हुआ था कि इसने ऑस्ट्रेलिया की टॉप 40 लिस्ट में और यूएस चार्ट्स पर 53 नंबर पर अपनी जगह बना ली थी। अब तक इस ट्रैक को 500 मिलियन से ज्यादा स्ट्रीम्स मिल चुकी हैं। एडिडास ब्रांड को एनएफटीज का जबरदस्त चस्का लग गया है, तभी तो एडिडास हर साल 6 महीने में कोई ना कोई नई एनएफटी ले आता है। इस बार एडिडास इमर्जिंग आर्टिस्ट के लिए कुछ एक्साइटिंग लेकर आ रहा है। एडिडास ने हाल ही में अपना रेजिडेंसी प्रोग्राम लॉन्च किया है, एक नया डिजिटल आर्ट इनिशिएटिव जो वेब3 स्पेस में इमर्जिंग आर्टिस्ट के लिए एक प्लेटफॉर्म ऑफर करता है। सोल में कोरियन ब्लॉकचेन वीक के दौरान 7 सितंबर को इसे लॉन्च किया गया। ये एडिडास की फर्स्ट एवर लिमिटेड और ओपन एडिशन एनएफटी सेल है। एडिडास स्टूडियो के इस इनिशिएटिव से जुड़ने वाले पहले 2 आर्टिस्ट हैं मोंकी मोटो और एड्रा कैंडल। इन दोनों आर्टिस्ट के काम को द गेटवे कोरिया में शोकेस किया गया और उनकी एनएफटी 6 से 11 सितंबर के बीच मिंट के लिए अवेलेबल थी। इस लिमिटेड एडिशन में हर आर्टिस्ट के लिए 100 पीसेस होंगे, साथ ही इवेंट अटेंडीज के लिए खास तौर पर स्पेशल हुडीज होंगी। इस पैकेज की कीमत 0.15 ETH रखी गई है, तो वहीं ओपन एडिशन की कीमत 0.03 ETH है। दोनों ही परचेज के लिए 6 सितंबर से अवेलेबल थी। एनएफटीज का अच्छा वक्त आ गया है भाई। जी शॉक जैसा बड़ा ब्रांड जो एनएफटी की दुनिया में कदम रख रहा है, और वो भी जी शॉक वर्चुअल एनएफटीज के साथ। पॉलीगॉन के प्लेटफॉर्म पर एक और बड़े ब्रांड की एंट्री हो गई है और वो है कैसियो। कैसियो ने हाल ही में अनाउंस किया है कि वो जल्द अपना वर्चुअल जी शॉक प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे, ताकि कैसियो के ग्लोबल यूजर बेस तक आइकॉनिक जी शॉक लाइन की शॉक रेजिस्टेंट वॉचेस पहुंच सके। इस पार्टनरशिप के तहत 15,000 लिमिटेड एडिशन जी शॉक क्रिएटर पास एनएफटीज 23 सितंबर से एक्सक्लूसिवली पॉलीगॉन पर मिंट की जाएंगी। वर्चुअल जी शॉक कम्युनिटी सबसे पहले डिस्कॉर्ड पर लॉन्च होगी, जहां 15,000 जी शॉक क्रिएटर पास एनएफटीज डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। इन पासेस के जरिए होल्डर्स को कम्युनिटी में को क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स और इवेंट्स का एक्सक्लूसिव एक्सेस मिलेगा।
इस इनिशिएटिव में सबसे पहले G-Shock क्रिएटर पास कलर डिजाइन कॉन्टेस्ट होगा, जहां कम्युनिटी मेंबर्स को G-Shock क्रिएटर पास के डिजाइन को क्रिएट करने का और उस पर वोट करने का मौका मिलेगा। वर्चुअल G-Shock वॉचेस पॉलीगॉन पर लॉन्च की जाएंगी और इसकी शुरुआत होगी NFT बेस्ड कम्युनिटी एक्सेस पासेस के साथ। कैसियो ने पॉलीगॉन को उसकी लाइटनिंग फास्ट ट्रांजैक्शन की वजह से चुना, क्योंकि इससे NFTs को मिंट और मैनेज करने का प्रोसेस सीमलेस, कन्वीनियंट और कार्बन न्यूट्रल होगा। NFT से रंग बिरंगे किरदारों और कलाओं की महक आना तो लाजमी होता है, लेकिन जो फूड वर्स ले आई है उससे तो लजीज बर्गर्स और रैप्स की खुशबू आ रही है। अपने जायकेदार बर्गर्स और रैप्स के लिए मशहूर बर्गरिल अब न्यू एज NFT टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ रहा है। बर्गरिल अपने 4 पॉपुलर बर्गर्स को बतौर स्पेशल डिश NFT OneRare फूड वर्स पर उतार रहे हैं। साथ ही इंग्रेडिएंट NFT के तौर पर अपनी OG सॉस भी ला रहे हैं। फूड वर्स के साथ एसोसिएशन बर्गरिल को एक फ्यूचरिस्टिक ब्रांड का दर्जा दिलाएगी। इन दोनों एंटिटीज का फोकस टेक्नोलॉजी इंक्लाइंड कस्टमर्स को टारगेट करके ज्यादा से ज्यादा पॉपुलैरिटी पाना है। तमाम इंटरेस्टेड कस्टमर्स बर्गरिल की NFTs को OneRare फूडवर्स के अंदर ऑल इंक्लूसिव और इंटरैक्टिव गेम प्ले में मिंट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, NFT ओनर्स को स्पेशल रिवॉर्ड्स मिलेंगे, जैसे कि प्रमोशंस, डिस्काउंट्स और डिस्टिंक्टिव बर्गर रेसिपीज। साथ ही वो इन गेम प्ले में हेल्दी पार्टिसिपेशन भी एंजॉय कर पाएंगे। बर्गरिल्स NFT एक लॉयल्टी प्रोग्राम का हिस्सा होंगी, जिसमें कई तरह की रिवॉर्डिंग एडवांटेजेस होंगी। बर्गरिल एक ऐसा फास्ट फूड ब्रांड है जिसने लॉन्च के साथ ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखी है। फिलहाल इस ब्रांड के 50 से ज्यादा आउटलेट्स हैं और ये ग्लोबल लेवल पर एक्सपेंशन प्लान कर रहा है। Well, that's all in this special episode of NFTverse। वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन NFT की दुनिया से ऐसी ही और मजेदार खबरें मैं रुचि शर्मा हर हफ्ते आपके लिए लाती रहूंगी। Till then, do like, share and subscribe to 3.TV और इसी तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें। Hello music lovers, welcome to 3.TV. I have got a fascinating piece of news for those of you who are music lovers and all those who contribute to creating music on the cusp of Web3 horizon. Well, does the name LimeWire ring music to your ears? Millions of people are now using LimeWire. Share all the music in the world. Everybody still downloads their stuff for free. I use LimeWire all the time. Is somebody going to come into my apartment, seriously, and arrest me? I remember downloading music from LimeWire. We all did it. LimeWire needs to shut down. Oh my God, the end of LimeWire. This is the death The music sharing site known as LimeWire has been shut down. Yes, LimeWire, the same file sharing platform of the early 2000s that shot to fame for its role in distributing pirated music and earned its share of notoriety. Well, LimeWire, after taking its initial baby steps in the world of Web3, is now gearing up to launch its AI creator studio on Polygon blockchain. With this, LimeWire wants to empower creators who will now have the option to monetize their content by selling it to their fans for a monthly fee. LimeWire's aim is to become the #1 platform for anyone to create, share, and monetize content. Created by American techie Mark Gorton in 2000, LimeWire was bought by two serial entrepreneur brothers, Julian and Paul Zehetner, in 2021 for an undisclosed amount. The company raised roughly $10 million in April 2022 as part of a private token sale by Kraken Ventures, Rington Capital, among others. In its changed avatar since its infamous days of spreading pirated music, LimeWire has now evolved into a Web3 content platform that aims to empower creators and artists in a decentralized manner.
LimeWire's Creator Studio's first use case is image generation, allowing users to create new images or enhance existing ones via various artificial intelligence models. This creative capability is just the beginning, as LimeWire plans to expand the studio's offerings to include AI-generated music in the third quarter. Users will have access to a library of melodies, beats, and songs to create their own AI-generated musical compositions. Isn't it great, guys? Prior to opening access to musicians uploading their own content, the library will initially source its content from LimeWire's partner platforms and natively owned content. Everything created in the studio will be minted on the Polygon blockchain. The platform splits earnings between the uploading artist of the original content and the creator of the newly AI-generated content. Artists earn a share of the ad revenue generated on LimeWire, paid out in its native LMWR token based on the number of views the content generates. Notably, these content pieces can also be traded on LimeWire's secondary market as non-fungible tokens or NFTs, providing an additional revenue stream for creators. When NFTs are traded, creators will receive a royalty currently paid in USDC stablecoin based on the trade volume. Creators will also have the option to monetize their content further by restricting access and requiring fans to pay a monthly fee denominated in USDC. Payouts through these various methods are sent to creators' LimeWire accounts and can be withdrawn at any time. The LimeWire AI Studio aims to cater to creators at all levels of experience. Marcus, LimeWire's Chief Operating Officer, has said that the studio is designed to be accessible for both seasoned creators and newcomers looking to embark on their creative journeys. While the platform offers a certain number of free creations per month to each user, those who engage more frequently will be subject to fees. LimeWire's strategic approach to pricing aims to strike a balance between accessibility and sustainability for its users. So what are you guys waiting for? Go to LimeWire's Creator Studio and start creating and monetizing your content. Well, that's all in today's special segment. I am Ruchi Sharma signing off. We will meet again with a different and interesting story. Till then, keep watching 3.2 TV and do like, share and subscribe to our channel. For more such updates, log on to our website www.3versetv.io or scan the QR code. Hello and welcome to 3.2 TV. I am Vishakha Thakur. Metaverse can appear to be a magical virtual universe where you can shop, play, work and perform multiple activities. But the virtual world brings along certain challenges too. What if someone tries to create a fake identity of yours and create a chaos in the metaverse? What if someone resorts to rumors mongering while pretending as your avatar or bully you by using replica of you or your friend? Well, China has plans to ensure that whatever happens in the metaverse should not stay in the metaverse. Yes, the country is all set to implement its social credit system into the metaverse. Now, if you are wondering what the social credit system is all about, let me simplify this for you. The social credit system introduced in China is a regulatory framework that reports on trustworthiness of companies, individuals, and the government. The unified record created by the system can be monitored in real time. And now, China plans to implement this in the virtual world too. It is exploring the implementation of a digital identity system for all users of the metaverse in order to maintain order and safety within the virtual world. Several details of an individual, such as his occupation, would be stored within this digital identity, and this data will be permanently stored and made accessible to authorities. So, if someone tries to create chaos in the metaverse, this digital identity will enable swift identification and punishment by the police. Well, companies and countries are trying their best to ensure privacy and safety in the metaverse, and reduction in such challenges will invite more users to the virtual world.
That's all in this story. Do like, share and subscribe to our channel, and for more such updates, log on to our website www.3versetv.io or scan the QR code. This is me, Vishakha Thakur, signing off. Hello and welcome to 3.0 TV. I am your host Shikha Singh. And in today's special segment, we will explore why Solana is the most loved altcoin among investors. So let's get started. Among several cryptocurrencies, Solana was touted to challenge Ether with an eco-friendlier approach, faster transaction speeds, and more consistent costs. These factors are strong enough to drive prices of any token. But in case of Solana, its fortune fluctuated with changing time. Unfortunately, Solana has lost over $50 billion in value since the beginning of 2022, a year marked by outages, overloads, and significant exposure to Sam Bankman-Fried's FTX exchange. Bankman-Fried's companies held nearly $1.2 billion worth of the token and associated assets. When FTX fell apart, investors bailed on Solana to the tune of about $8 billion. Since then, interest in altcoins may have waned as big crypto investors pull cash out of the funds, but there is one coin which still has them excited, and it's none other than Solana. Over the past 7 weeks, investors have largely withdrawn from crypto investment products. European digital asset manager CoinShares said in a Monday report. For the past 9 weeks, institutional investors have been plugging cash into the 10th biggest digital asset by market cap, Solana. CoinShares said that $700,000 had been invested over the past week into Sol via crypto investment providers, making the cryptocurrency the most loved altcoin among investors at present. Why are we terming Sol as the most loved altcoin? If you consider year-to-date fund inflows in the protocol, it currently stands at a whopping $26 million. In contrast, investors in the past week pulled $8.6 million out of Polygon investment products and $3.2 million out of Ethereum. Investors did put $3.8 million into Bitcoin, the biggest digital asset by market capitalization, and pulled out of short Bitcoin products for the 19th consecutive week. Solana has been getting some traction lately because MakerDAO's co-founder and CEO Rune suggested launching the project's new chain on Solana-based platform. This will lead to more network activity and transactions on Solana blockchain, which can be translated into the rise of Sol token. In another latest announcement, payment giant Visa expanded its stablecoin settlement services to the Solana blockchain. The program is currently in a pilot and testing phase, but looks to improve upon the capabilities of legacy payment rails. Lastly, Sol is the asset used to make transactions on Solana. Blockchain developers use to build decentralized applications, which can be anything from first-person shooter games to decentralized finance lending protocols. Well, that's all in today's special segment. We will keep meeting again. Until then, keep watching 3.0 TV. Do like, share and subscribe to our YouTube channel. For more such updates, please log on to our website www.3versetv.io or scan the QR code to know more. Hello and welcome to 3.0 TV. I am Vishakha Thakur. As per blockchain consultant Panos Mekros recently posted the thread on X, the XRP token holder can lock in profit from the upcoming introduction of a new automated market maker feature on the XRP ledger.
thanks to the new proposal, which is an innovative profit-sharing approach, enables liquidity providers to capture a large portion of the profits usually earned by arbitrators. The most recent version of the XLS 30 proposal, revised on August 4, 2023 by Dr. Anshul Malhotra, the research head at XXX, and David Schwartz, Ripple CTO, aims to integrate non-custodial automated market makers directly into the XRP Ledger's decentralized exchange. This is made possible by perpetually auctioning trading benefits to arbitrators and imposing fees on them, which are subsequently distributed among liquidity providers. In the XLS 30 framework, each AMM instance is engineered to levy a trading fee spread when traders shift the token ratios within their liquidity pools. These collected fees are then funneled into the AMM's capital pool, thereby amplifying the returns for those providing liquidity. The proposal also envisions a frictionless interface between the AMM-based and the limit order book-based trading systems on the XRPL DEX. This integration ensures that traders can access a full range of order flows and liquidity options across both types of platforms. The system's payment and order placement algorithms are designed to automatically source the most advantageous prices for users by considering options across both AMMs and LOBs. The XLS 30 feature is anticipated to be incorporated into the 1.12 version of Rippled, the open source software that underpins the XRP Ledger. Now, this update is planned for September 11, 2023, but its final inclusion is contingent upon approval from all active XRPL UNL validators. According to Macros, AMMs use passive asset owners as liquidity providers to enhance market depth, mitigate the risk of sudden market crashes, and offer continuous liquidity as opposed to markets that close on weekends and bank holidays. In the traditional finance space, Macros points out that the correspondent banking model for foreign exchange settlements creates complexities and additional costs for users. The FX traders are required to navigate cumbersome process, which involves depositing funds with a broker, incurring fees, bank charges, and finally bank fees for completing the trade. Though the DeFi system is still to make a significant impact in the crypto world, but it offers multiple advantages through AMM. Now, these benefits include quicker, more cost-effective, and more efficient value transfers. Macros sees a significant opportunity in the tokenization of real-world assets like treasuries and precious metals, which could be issued on the XRPL AMM by reputable institutions, thereby expanding liquidity options. That's all in this story. Do like, share, and subscribe to our channel. And for more such interesting updates, log on to our website www.3versetv.io or scan the QR code. This is me, Vishakha Thakur, signing off. Hello and welcome to 3.0 TV. I am your host Shikha Singh. Tokenization of everything is possible on this planet, including the household collectibles, real estate assets, to instruments like US Treasuries, and as exotic as smart contracts is gaining traction as mainstream investors fancy their chance with this replica of real-world assets, or RWAs, offers an opportunity to create liquidity. Why are we discussing tokenization while the cryptos are bleeding? Oh, yes, we know. Cryptocurrency is an entirely new breed of asset, from Bitcoin to Ether to Dogecoin. They are virtual digital currencies, also known as magic internet money. They are often misunderstood and hence scare away uninitiated investors. Tokenization, on the other hand, takes assets from the real world and puts them on-chain, marrying the perks of blockchain with assets from the real world. Now let's hear it from our guest, Mr. Kushal Patel, on how does tokenization work? What are the basics of tokenization? Tokenization essentially is creating a second layer on top of the base layer, like a virtual entity of an existing asset, collectible, or item.
if we take Web3 aside for a minute, even your debit cards or credit cards can be tokenized, and these tokenized versions are allowed to be saved with e-commerce platforms, with online digital platforms and places like that, where the platform can charge the tokenized version of your card rather than actually saving the real card, and then they can deduct money from that, and it just keeps your card safer because the tokenized version is not the real thing at the end of the day. While talking about Web3, we talk about a lot of real world assets that come into the space of Web3 to take advantage of the great amount of liquidity that is in the crypto markets. Thank you, Mr. Patel, for sharing such insightful information. So what we have understood is you tokenize real world assets and use them as collateral for monetizing assets which otherwise would remain idle. Interesting stuff. Yes, through tokenization process, you can transform anything, including intellectual property, and start generating income. Let's start with a hypothetical. Think of someone running a YouTube channel and basics of cryptocurrencies. Creator could tokenize that copyright and sell it to a financier. This type of model exists in the real world of larger music companies and private equity. Let's hear it from Mr. Vijay Geer on the significance and security of tokenization as well as the different kind of tokenizations. Tokenization has become possible because of a blockchain, because that provides a secure and transparent ecosystem for P2P transactions, peer-to-peer transactions. And to automate this process, smart contracts can be used. These tokens are broadly classified into three categories. Like security tokens that represents traditional financial securities like bonds and equities. The second type of token is the utility token, which provides access to a product or some services but within an enclosed ecosystem. These tokens does not have any value outside of their environment. The third kind of tokens are asset-backed tokens. Thank you, Mr. Vijay Geer, for sharing such insightful information. Tokenization is not a new tech, it's just getting new adoption and recognition. CryptoPunks, Rare Pepes are in existence since 2017, the time of arrival of tokenization. Since then, the infrastructure has improved. The on-ramps are smoother, institutions are token curious, and surprising economic forces have spurred adoption. Recently, tokenized US treasuries have surpassed the $600 million mark. Let's hear it from Mr. Dhruval Shah for his views on the same. So, I would give more credit to the tokenization system here. I think the only reason that US treasuries are gaining a lot of traction on tokenization, the first is, of course, because there's a demand. Because US treasuries are now giving a lot of yield, it is kind of considered as, a risk-free asset. Because it is a US treasury, people don't expect US to fall, and the yields are so high. Somebody, of course, just to solve this problem, because it can be brought on the blockchain. Now, people who don't have this traditional access or traditional know-how to deal with bonds, now because it is brought on blockchain and it is tokenized, and also what you can do is tokenization also, you can also bring in fractional tokenization, right? You don't have to buy in the entire treasury bond. Now you can fractionalize it and people can even buy, $10, $15 worth of treasury bond, bringing in more liquidity and more access to a lot of Asia and other countries that might not have the same ticket size. The after effects of FTX and others may have had a negative impact on the new age technology, but that's a momentary reaction given the enormous possibility of digital currencies and virtual digital assets. The list of advantages is endless. Well, the merits and favorable and outnumber those negative arguments. Very soon we may have a situation when the world will truly become tokenized. That's it in today's special segment. For more such updates, follow 3.0 TV or log on to our website www.3verstv.io or scan the QR code to know more.
नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट विशाखा ठाकुर। 3.0 टीवी में आपका स्वागत है। आज के इस खास शो में हम बात करने वाले हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की, जहां हम देखेंगे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किस प्रकार से किया जा रहा है। भारत के टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो क्या आप जानते हैं कि भारत टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वर्ल्ड में टॉप पोजीशंस में है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का रेवेन्यू इंडिया में लगभग $137 बिलियन है। ये इंडस्ट्री देश की जीडीपी में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री अपनी रिच हेरिटेज, इंटीग्रेट क्राफ्ट्समैनशिप और डाइवर्स रेंज ऑफ फैब्रिक्स के लिए जानी जाती है। तो आइए रुक करते हैं इंडिया की कौन कौन सी कंपनीज है जिन्होंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपनाया है। बिरला सेल्यूलोज, सस्टेनेबिलिटी फोकस्ड मैन-मेड सेल्यूलोसिक फाइबर्स प्रोड्यूसर बिरला सेल्यूलोज ने अपनी सस्टेनेबिलिटी क्रेडेंशियल्स के साथ साथ ब्रांड और कंज्यूमर कनेक्ट को मजबूत करने के लिए टेक्सटाइल जेनेसिस के साथ पार्टनरशिप की है। कंपनी ने कहा है कि वह टेक्सटाइल जेनेसिस के ब्लॉकचेन एनेबल्ड डिजिटल ट्रेसेबिलिटी प्लेटफॉर्म का लाभ उठाएगी, जो कि एंड कंज्यूमर को टेक्सटाइल वैल्यू चेन में ट्रांसपेरेंसी प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण टूल है। 2019 में लॉन्च किए गए बिरला सेल्यूलोज के ब्लॉकचेन बेस्ड और मॉलिक्यूलर ट्रेसर बैग प्लेटफॉर्म ग्रीन ट्रैक फाइबर ट्रेसेबिलिटी टूल में अब 90 प्लस ब्रांड्स और 1500 प्लस वैल्यू चेन पार्टनर्स भी हैं और दुनिया भर में 56,000 मीट्रिक टन से अधिक फाइबर ट्रैक किया गया है। आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे अरविंद लिमिटेड की, जो कि भारत की सबसे बड़ी टेक्सटाइल और डेनिम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसकी रिटेल प्रेजेंस मजबूत है। इससे भारत में डेनिम की अग्रणी कंपनी माना जाता है। अरविंद के पास खुद के लाइसेंस ब्रांड्स और रिटेल फॉर्मेट्स का एक पेजोड़ प्लेटफॉर्म है। अरविंद ने अपनी सप्लाई चेन में प्रोसेस की विजिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के स्पेशलिस्ट टेक्सटाइल जेनेसिस के साथ हाथ मिलाया है। टेक्सटाइल जेनेसिस द्वारा प्रदान किए गए प्लेटफॉर्म को इनपुट प्रोडक्शन डेटा के लिए सप्लाई चेन के हर स्टेज में स्टेक होल्डर्स या पार्टिसिपेंट्स की आवश्यकता होती है, जो कि प्रोसीडिंग्स में निगरानी स्थापित करता है। ऐसा कहा जाता है कि इस टेक्नोलॉजी को फाइबर कॉइन्स के माध्यम से अपैरल इंडस्ट्री की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है, जो कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन पर सस्टेनेबल फाइबर्स का एक डिजिटल ट्विन बनाकर अपैरल सप्लाई चेन में टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स का पता लगाने और मैनेज करने की क्षमता पैदा करता है। मैन्युफैक्चरर के रूप में अरविंद मैन्युफैक्चरर को ओरिजिन पर केजी फाइबर के लिए एक डिजिटल फाइबर कॉइन भी जारी किया गया है, जो एक फिजिकल गुड के ट्रांजैक्शन को दर्शाता है। ये सस्टेनेबल मटेरियल्स की फिजिकल वॉल्यूम को डिजिटल बनाने के लिए ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल टोकन्स हैं और बिजनेसेस के लिए किसी भी लीगल और फाइनेंशियल रिस्क को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए किसी क्रिप्टो करेंसी पर आधारित नहीं है। हाल ही में टेक्सटाइल बिजनेस ने उतार चढ़ाव देखा है, जिसके चलते अरविंद को अपने रेवेन्यू में गिरावट का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी इन्होंने अपने बिजनेस मार्जिन में सुधार लाने की कोशिश जारी रखी है। ऐसा अरविंद कॉस्ट सेविंग्स के जरिए कर रही है। जेनेसिस टेक्नोलॉजी इन्हें इस कार्य में मददगार साबित हो सकता है। आगे बढ़ते हुए आइए जानते हैं वेलस्पन इंडिया कैसे कर रही है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। होम टेक्सटाइल के ग्लोबल लीडर्स में से एक वेलस्पन इंडिया वेल ट्रैक 2.0 के साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बदलने के लिए तैयार है, जो 2018 में पेश की गई कंपनी की पेटेंटेड एंड टू एंड ट्रेसेबिलिटी टेक्नोलॉजी वेल ट्रैक का अपग्रेड है। अपग्रेडेड प्लेटफॉर्म को स्टेक होल्डर्स, रिटेलर्स से लेकर फार्मर्स और मैन्युफैक्चरर्स से लेकर सप्लायर्स, ट्रेडर्स, सर्टिफाइंग बॉडीज और एंड कंज्यूमर्स तक सप्लाई चेन में रॉ मटेरियल्स को उसके ओरिजिन तक ट्रैक करने के लिए डिजाइन किया गया है। वेलस्पन इतने बड़े पैमाने पर ब्लॉकचेन और एआई बेस्ड ट्रेसेबिलिटी प्लेटफॉर्म का उपयोग करने वाले पहले होम टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर में से एक बन गया है, जो कि अपने सभी प्रोडक्ट लाइंस का साथ साथ सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड डेटा पॉइंट्स को कैप्चर करने के लिए तैयार है। इनमें वाटर यूसेज, फेयर पे, पावर कंजम्पशन, जेंडर इक्वालिटी जैसे ESG मेट्रिक्स शामिल हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं विशाखा ठाकुर आपसे विदा लेती हूँ। ऐसी ही ब्लॉकचेन से जुड़ी अपडेट्स हर मंगलवार मैं लेकर आऊंगी आपके लिए। और ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉगिन करें या फिर स्कैन करें हमारा QR कोड।
नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। NFT की दुनिया में पिछले कुछ महीनों से काफी हलचल हो रही है। सेल्स और ट्रेडिंग वॉल्यूम गिर रही है। ब्लू चिप NFTs का फ्लोर प्राइस गिर रहा है, जो कुछ समय के लिए अपने ऑल टाइम लो तक पहुंच गया था। कई NFT प्लेटफॉर्म्स शट डाउन हो गए और अब हाल ही में कई NFT मार्केट प्लेसेस ने रॉयल्टीज ऑप्शनल करने का फैसला किया है, जिस पर जाहिर है NFT कम्युनिटी ने विरोध भी जताया है। रॉयल्टीज को ऑप्शनल करने का ऐलान सबसे पहले नंबर 1 NFT मार्केटप्लेस OpenSea ने किया। अब OpenSea जैसी मार्केटप्लेस जिस पर सबसे ज्यादा NFT ट्रेडिंग होती है, ऐसा फैसला करेगी तो जाहिर है उससे पूरी NFT कम्युनिटी पर असर तो पड़ेगा ही। लिहाजा सबसे बड़ी NFT कंपनी युगा लैब्स ने OpenSea को ही ब्लॉक करने का फैसला कर दिया। इसका ये असर हुआ कि हर महीने सबसे ज्यादा सेल्स वॉल्यूम दर्ज करने वाली OpenSea ने पहली बार अगस्त के महीने में 100 मिलियन से कम की ट्रेडिंग वॉल्यूम दर्ज की। अब OpenSea क्रिएटर रॉयल्टीज दोबारा जारी करने से तो रही, तो ऐसे में यूजर्स को फिर से अपने प्लेटफॉर्म पर खींचने के लिए OpenSea 4 नए इम्प्रूवमेंट प्रपोजल्स लेकर आ रही है और तो और एक्टिवली अपनी कम्युनिटी से फीडबैक भी ले रही है। साथ ही फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए कोलैबोरेशन भी कर रही है। OpenSea अपने क्रिएटर्स को सेल्फ सर्व टूल ऑफर कर रही है, जो उन्हें अपनी NFTs में रिडीमेबल क्वालिटीज ऐड करने की इजाजत देता है। OpenSea ने फ्री प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट रिडीमेबल NFTs रिलीज की हैं। तो जहां एक तरफ OpenSea यूजर्स को बांधने और अट्रैक्ट करने के लिए रिडीमेबल NFTs लेकर आई है, तो वहीं दूसरी तरफ महज महीने भर पहले लॉन्च हुई बेस NFTs कमाल कर रही हैं। जियोन एनालिटिक्स के डेटा के मुताबिक बेस ने लॉन्च से अब तक के बीच करीब 1 मिलियन एड्रेसेस जोड़े हैं। इतना ही नहीं, बेस की डेली ट्रांजैक्शंस के आंकड़े ने पिछले हफ्ते आर्बिट्रम और ऑप्टिमिज्म को भी पीछे छोड़ दिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि बेस पर 68 मिलियन NFTs मिंट की गई हैं, जिसमें से ज्यादातर यानी करीब 59.5 मिलियन ब्रिज टू बेस NFTs थी। इथेरियम L2 पर पॉलीगॉन के बाद बेस चेन पर सेकंड हाईएस्ट NFT एक्टिविटी दर्ज की गई है। ऐसी आशंका है कि आने वाले वक्त में बेस के नेटवर्क पर और ज्यादा क्रिप्टो और NFT प्रोजेक्ट्स बिल्ड किए जाएंगे। इस खास स्टोरी में फिलहाल इतना ही। 3.TV को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें। नमस्कार, मैं हूं मनोज दारा और 3.TV में आप सभी का स्वागत है। आज के इस खास शो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे धीरे धीरे करके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को भारत द्वारा अपनाया जा रहा है। कुछ महीने पहले फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने एक बयान में कहा था कि अगले कुछ सालों में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग लगभग 50% बढ़ जाएगा और जिस तरह भारत में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन हो रहा है, ये देखकर लगता है कि ब्लॉकचेन युग में भारत अपनी एक अहम भूमिका निभाने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं एशिया के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी की। हाल ही में AGM में मुकेश अंबानी ने ऐलान किया है कि उनकी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ब्लॉकचेन और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के टेक्नोलॉजी में भी भरोसा दिखाया है। अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत के डिजिटल विकास कहानी में सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ियों में से एक रही है और CBDC और ब्लॉकचेन में इसके नवीनतम प्रवेश की घोषणा से इंडिया के ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एडॉप्शन के लिए नए पंख जरूर मिल जाएंगे। मूविंग ऑन, हम बात करने वाले हैं दिल्ली की एक इंपॉर्टेंट खबर के बारे में, जहां पर दिल्ली पुलिस ने लगभग 1500 कर्मचारियों को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षित किया है, जो कि 3000 से भी अधिक फॉरेंसिक सैंपल्स को प्रोसेस और एनालिसिस भी करते हैं। एनालिसिस और रिपोर्टिंग के लिए क्राइम सीन से एकत्रित किए गए क्रिटिकल एविडेंस या सैंपल्स ह्यूमन इंटरफेस या इंटरफेरेंस से मुक्त रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली फॉरेंसिक्स साइंस लैबोरेटरीज विच इज DFSL जल्द ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करेगी। DFSL के फॉरेंसिक ऐप के साथ टेक्नोलॉजी का इंटरैक्शन 24 अगस्त को राजनिवास में लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना द्वारा लॉन्च भी किया गया। ऑफिशियल्स के अनुसार दिल्ली FSL देश में अपनी तरह की पहली इंस्टीट्यूट होगी जो डिजिटल रूप से सबूतों को ट्रांसपेरेंट और छेड़खानी मुक्त रिकॉर्ड के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और हम बात करने जा रहे हैं त्रिपुरा के
त्रिपुरा राज्य की बेनिफिशियरी मैनेजमेंट सिस्टम पर जानकारी सुरक्षित करने के उद्देश्य से त्रिपुरा सरकार ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करना शुरू कर दिया है। राज्य सरकार ने बैंगलोर स्थित NIC ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के साथ पार्टनरशिप की है। इसके साथ ही साथ APIs यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का उपयोग भी कर रही है। राज्य सरकार APIs का उपयोग करके स्टेट बेनिफिशियरीज डेटा सेट्स को ब्लॉकचेन पर स्टोर रखना, रिकॉर्ड की सुरक्षित करने और डेटा हेराफेरी को रोकने में सक्षम भी होगी। ये एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। त्रिपुरा ब्लॉकचेन बेनिफिशियरी मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग करके स्कीम स्पेसिफिक अप्रूवल बेनिफिशियरी लिस्ट, अप्रूव ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट और सक्सेसफुल ट्रांजैक्शंस के बारे में स्कीम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सुरक्षित भी रखा जा सकता है। तो ये कार्रवाई राज्य सरकार के डिजिटल त्रिपुरा को बढ़ावा देने के लक्ष्य को समर्थन भी करती है। आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस दैट इज RTO इंस्पेक्टर्स के ट्रांसफर्स के लिए ब्लॉकचेन बेस्ड कंप्यूटराइज्ड सिस्टम का उपयोग करने की योजना भी बना रहे हैं। चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने एक आदेश दिया है कि धोखाधड़ी को रोकने के लिए RTO इंस्पेक्टर्स के सभी ट्रांसफर्स विशेष रूप से ऑनलाइन किए जाएंगे। तो ऑनलाइन ट्रांसफर्स के लिए ब्लॉकचेन आधारित सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए एक प्राइवेट कंपनी को काम पर रखने के अलावा क्वालिफाइड इंस्पेक्टर्स के लिए सर्विस हिस्ट्रीज के डेटाबेस की भी तैयारी की जा रही है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के उपयोग से हेराफेरी में काफी कमी आएगी, ऐसा उनका मानना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मनोज दार आपसे विदा लेता हूं। ब्लॉकचेन से जुड़ी अपडेट्स हर मंगलवार में आपके लिए लेकर आऊंगा और ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे वेबसाइट 3.0 वर्ड्स टीवी पर लॉग ऑन करना मत भूलिए और हमारे QR कोड को स्कैन करना न भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। Hello and welcome to 3.0 TV. I am your host Ruchi Sharma. Well, the Web3 space is seeing a huge influx of fund, especially in the artificial intelligence segment, thanks to ChatGPT and similar other products that have disrupted not only the way businesses are shaping up, but the immense potential it offers, touching every aspect of daily life. Of late, the optimism has subsided and so did the capital flow. In August, the fund flow has grounded to a lowest point not seen in over 2 years. Venture capitalists invested less than $500 million in crypto businesses in August, according to the Block Research data. Except for a few red-hot sectors such as artificial intelligence, venture funding levels have fallen dramatically this year. A Crunchbase report in April found that total VC investment in the first quarter of the year came in at $76 billion, down from $162 billion in the same period of 2022. The notable funding activity included Bitco raising $100 million in August, while WorldCoin developer Tools for Humanity and EagleLayer collected $115 million and $50 million respectively. Against the backdrop of drying fund flow, let's hit the deal street for this week. D-Matrix Corporation, a startup that designs and builds high-efficiency silicon and generative artificial intelligence compute platforms for data centers, has raised $110 million in an oversubscribed Series B funding round led by Singapore-based global investment firm Temasek. The company builds specialized chips and platforms that target the deployment of generative AI at the inference stage. This is when an AI is being used to predict and produce new information from data it has never seen before, such as when it's providing assistance, advice, or insights. This funding announcement follows the launch of D-Matrix Jayhawk 2 chiplet last month, featuring enhanced DIMC architecture. With this new chiplet-based platform, D-Matrix says that its customers can gain a 10 to 20 times increase in efficiency over graphical processing units and 10 to 20 times saving in cost. Existing investors Playground Global, Microsoft Corporation's M12 venture fund,
Nautilus Venture Partners and Entrada Ventures also participated in the round and were joined by new investors including Industry Ventures, Ericsson Ventures, Marlin Holdings, Murray Asset and Samsung Ventures. D-Matrix received $44 million in a funding round in April 2022 led by M12 and Korean semiconductor maker SK Hynix Incorporation. The round brings the company's total funding to $154 million. D-Matrix deal reminds me of oil-to-chemical behemoth Reliance Industries partnering with Nvidia, the largest chip maker. The generative AI space is hotting up. Next on the list is fundraising by the US startup Helm.ai, which opened its first international office in Dusseldorf, Germany for AI software for driverless car developers. This follows a $55 million Series C funding round led by Freeman Group with participation from venture capital firms ACVC Partners and Amplo, as well as strategic investments from Honda Motors, Goodyear Ventures and Sungwoo High-Tech. Helm.ai provides OEMs and Tier 1 companies with hardware-agnostic AI software for advanced driver assistance and L4 driverless car systems. The deal we are covering is from the decentralized exchange space. Brian Fay has raised $16.5 million at a valuation of $100 million in an investment round led by Pantera Capital. Elevation Capital, Starkware Limited, Spartan Group, Goodwater Capital, Upsparks Ventures, Proto Fund Ventures were the leading participants in the fundraising round. The fresh funding is notable given that venture capital for digital asset firms has mostly dried up, with cryptocurrency and blockchain startups receiving 76% less investment in Q2 2023 than the same period 1 year earlier, Crunchbase reported in July. Brian Fay, powered by Ethereum scaling system Starkware, is the non-custodial decentralized order book that allows privacy for trading positions via so-called zero-knowledge proofs. Traders can thus place large orders without worrying about front-running or spooking orders. The platform also boasts high-speed trade execution. It opened for traders in May and recently executed $3 million to $4 million daily trading volume. Next deal is a fintech company. Gen2, a fintech platform that specializes in securitization, raised $15 million in a Series A funding round led by hedge fund luminary Steve Cohen's Point72 Ventures, the company said on its website. The Zurich-based firm plans to use the funding to grow internationally and to develop its financial engineering platform. Pete Casella, senior partner and co-head of fintech investments at Point72 Ventures, also joins Gen2's board of directors, the firm said. Point72 Ventures is a global venture capital fund based in New York and Menlo Park in California. Its investments range from $250,000 to $50 million, and it invests from pre-seed to pre-IPO. Next, and the final deal on our radar is that of HR tech startup Atomic Work. It has raised $11 million in its seed funding round and officially launched its platform after emerging from stealth mode. The funding round was led by Bloom Ventures and Matrix Partners and also saw participation from Storm Ventures, Neon Fund and prominent angel investors, the startup said in a statement. Funded in September 2022 by Rajapati, Kiran Darisi and Parsuram Vijay Shankar, Atomic Work leverages AI to improve employee experience while simplifying the number of tools employees interact with every day. Atomic Work operates atop collaboration tools such as Slack and Microsoft Teams, harnessing conversational intelligence to automate support, service delivery, and operational tasks at a large scale. The funding announcement comes at a time when Indian startups are experiencing funding winter. Funding in startups plunged to $5.4 billion in H1 2023 compared to $19 billion in the corresponding period of last year, as per Inc. 42's report. With that last update, we have come to an end of the special edition, The Deal Corner. Do like and share our channel. This is me, Ruchi Sharma, signing off. For more such updates and our interesting stories, log on to our website www.3worldstv.io or scan the QR code.
और क्या चल रहा है आजकल Web3 की दुनिया में, क्या कुछ नई खबर है? Web3 की दुनिया में वर्चुअल शॉपिंग रफ्तार पकड़ रही है। वाओ, शॉपिंग! आई एम अ टोटल शॉपaholic। I know, लेकिन वर्चुअल दुनिया में शॉपिंग कैसे करते हैं? जिस तरह से आप ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं, उसी तरह से आप मेटावर्स में अपने एवेटार और अपने लिए शॉपिंग कर सकती हैं। मेटावर्स में अनगिनत ब्रांड्स एंट्री ले चुके हैं as brands are betting big on metaverse। और recently one of the beauty industry leaders L'Oréal Paris ने अनाउंस किया है कि वो अपनी ब्यूटी डिवीजन के कई वर्चुअल शोरूम्स लॉन्च करने वाले हैं। तो आप अनलिमिटेड स्किन केयर और हेयर केयर प्रोडक्ट्स मेटावर्स में ट्राई कर सकती हैं और खरीद भी सकती हैं। विशाखा, इसका मतलब ये है कि कोई भी हेयर कलर खरीदने से पहले मैं उसे ट्राई कर सकती हूँ और चूज कर सकती हूँ कौन सा कलर मुझ पे सबसे ज्यादा सूट करता है। Exactly. That's amazing. I mean, घर बैठे बैठे रियलिस्टिक शॉपिंग का मजा। तो विशाखा, ब्रांड्स तो बहुत सारे हैं, कोई ऐसी ऐप है जहाँ एक ही ऐप में बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स हो? बिल्कुल। फ्लिपकार्ट पिछले साल दिवाली पर अपना मेटावर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपवर्स लेकर आया था एंड नाउ Flipkart has announced the launch of its metaverse-powered immersive virtual shopping feature, जो कि Flipkart ऐप पर अवेलेबल होगी। मतलब जहां हम अलग अलग ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स ट्राई कर सकते हैं ना? सही पकड़े हैं। तो विशाखा, मैं तो चली Web3 की दुनिया में वर्चुअल शॉपिंग करने। बाय बाय। बाय। तो क्या आप सभी ने भी वर्चुअल शॉपिंग ट्राई की है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मेटावर्स में और कौन से ब्रांड्स हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं और Web3 की दुनिया में क्या चल रहा है, ये सभी जानने के लिए लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट www.freeversetv.io पर या फिर स्कैन कीजिए QR कोड। Hello and welcome to 3.0 TV. I am your host Vishakha Thakur. Bitcoin, the largest cryptocurrency by market capitalization, has repeatedly failed to break above $26,000 mark as systematic overhang continue to pressure the price lower while blurring the future outlook. One of the biggest systematic concerns being the cost of production. If the term sounds Greek to you, stay tuned as we try and explain you what does that mean. JP Morgan, the US-based financial services provider, has recently adjusted its estimation of Bitcoin's production costs, which has garnered attention. The New York headquartered company revised Bitcoin production cost at $18,000 from previously standing $21,000. This move is closely tied to the Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index's decision to update its methodology, highlighting the interconnectedness of financial analysis and industry metrics. Notably, the CBECI is known for its critical role in tracking and estimating the electricity consumption of the Bitcoin network. JP Morgan analysts under the guidance of Nikolaos Penigurtoglu noted in a recent report that the new methodology changes the landscape of Bitcoin's production cost estimations. According to the analysts, this shift implies that future changes in electricity prices will have a comparatively lesser effect on mining costs. There's a broader impact of CBECI's adjustments than simply changing estimates. Analysts discovered the changes in electricity costs can significantly reduce the cost of producing one Bitcoin. With the new CBECI methodology, the sensitivity has decreased slightly to approximately $3,800 compared to the previous $4,300 change for every 1 cent per kilowatt hour. According to the analysts, the sensitivity is expected to double after the 2024 halving event, which will decrease miners' rewards by half. Now, this change will amplify the importance of cost management due to the higher impact of electricity costs on the overall mining expenses. Well, JP Morgan adjusting Bitcoin production costs lower will have its implication on prices, but now the markets are more keen to know Federal Reserve stance post-inflation data later this week. That's all in the story. Keep watching 3.0 TV for more such updates and log on to our website www.3versetv.io or scan the QR code. This is me, Vishakha Thakur, signing off.
3.0 TV, stay connected with the world of blockchain. Stay up to date with infinite world of NFTs. Come explore and evolve with 3.0 TV in the metaverse. So many coins, so much volatility. 3.0 TV delivers the news that matters. Hello and welcome to 3.0 TV. I am Vishakha Thakur. The leading virtual digital assets or VDA prices rose in the last 24 hours as the recent spate of the US macroeconomic indicators pointed to negligible chance of Federal Reserve raising key lending rates during the FOMC meet next week. Bitcoin, the world's most valuable cryptocurrency, extended its rally by topping above $26,500 mark. It recently changed hands at $26,535.01, up by 0.31% over the past 24 hours. Ethereum, the second largest crypto in market value, was quoting 0.32% lower at $1,626.99. Among smaller tokens, Hedera, Hashgraph and Solana Sol led gains amongst major tokens, rising 6% and 3%. Hedera announced on Wednesday at token 2049 in Singapore that Stablecoin Studio, its open-source stablecoin issuance and management toolkit, is live. Meanwhile, the open interest in perpetual futures contracts tied to Sol has jumped 35% to a two-month high of 16.25 million Sol in 1 week, representing an influx of money in the market. The fund inflow is built on prospect of FTX creditor liquidations. As such, the global crypto market cap jumped 2.37% to $1.05 trillion over the last 24 hours. Simultaneously, the total crypto market volume increased 9.17% to $35.51 billion. The total volume in DeFi is currently $2.05 billion, and all stablecoins $33.43 billion, representing 5.78% and 94.13% respectively of the total crypto market 24-hour volume. Bitcoin's dominance rose 0.25% to 48.93%. IC15 index, the barometer of top 15 tokens, gained 0.80% to 34,306.20. The US retail sales data showed a strong consumer spending momentum, with retail sales rising by 0.6% in August, while PPI grew by 0.7%. Initial jobless claims rose by 220,000. In view of the recent data, the market's experts believe that the Fed has completed its interest rate hikes. Traders see a 97% chance that interest rates will remain steady at 5.25 to 5.50% amid Fed maintaining its current monetary policy. Pizza Hut and Publicis Middle East have begun their journey into the metaverse by announcing a Fun for All collaboration. With a variety of dining options, Fun for All is a service that unites groups and families.
The original Pizza Hut Roblox metaverse experience, The Hut, is influenced by the work of the brand supporters and Roblox users who have been helping the brand by developing their own pizza-related Roblox experiences. Through an adventure established in a virtual Pizza Hut environment, the brand and agency brought together fans of pizza and Roblox to celebrate their shared love for pizza. Fans will be able to seek for ingredients to make their favorite pizzas while wearing exclusive pizza-themed clothing as they explore the virtual Pizza Hut world in the hut. They will also receive badges, power-ups, and other rewards as compensation. Users will have the option to customize their Roblox avatars before entering the event with special pizza-themed attire and accessories such as cheese and tomato onesies, tomato helmets, and pepperoni spectacles. Crocs World, a metaverse activation taking place on the Roblox and Zepeto platforms, is being presented by the most recent iteration thanks to a new partnership between global esports organization Gen G and the footwear company Crocs. Fans can participate in the Crocs World activity by creating a pair of Crocs and entering a competition. Gen G has partnered with Crocs to launch Crocs Metaverse activation on Roblox, Crocs World Tycoon. The collaboration marks a major non-endemic return for Gen G, marking the second such activation with the esports organization. The game allows users to create their own design and explore a beach theme park inspired by the footwear brand. The platform also offers the chance to win ZEM currency and other virtual items for their avatars. Gen G has previously collaborated with non-endemic brands like NASCAR and potato product manufacturer Idahon Foods, showcasing its commitment to innovation and collaboration. Conserve AI, the first G2B2C e-tourism sovereign metaverse platform MVP, is proudly announced by Meta Essence as a pre-commercial launch. This cutting-edge innovation completely changes how we explore and interact with virtual reality. Conserve AI offers customers an unmatched voyage into a world of limitless possibilities by forging seamless connections in the metaverse. Conserve AI allows people from across the world to engage on thrilling and cutting-edge virtual excursions from the comfort of their own devices, enabling travel and adventure to transcend physical boundaries. Making a distinctive avatar and pairing it with a virtual personal assistant who speaks your favorite dialect in the first step in creating a personalized and immersive experience. Conserve AI enables users to tokenize avatars, buy and market virtual assets, connect their digital wallets securely, and earn incentives for their virtual adventures. The company's SocialFi platform enables users to interact with other adventurers, exchange stories, and also make lifelong memories. Conserve AI is a community-driven platform because of this dynamic social network's promotion of cooperation and enhancement of the user experience. In the upcoming segment, we will update you about the following news. SEC takes action against Stoner Cat's NFT creator for selling unregistered securities. Japan's Campfire launches new Web3 company for NFT and DAO services. Fred.tech's daily Ethereum trading volume surpasses NFTs again. Stay tuned for more updates. The makers of Stoner Cats 2 LLC, have been accused of selling over 10,000 NFTs for $800 apiece without properly registering them as securities backed by crypto assets. On July 27, 2021, the sale, which collected money for the series and featured an old woman and her feline pets doing in cannabis-related activities, took place in just 35 minutes. 2 days following the NFT sale, the first episode aired. The Stoner Cats project was led by actress Mila Kunis, who worked with seasoned NFT creators. Famous actors like Ashton Kutcher, Chris Rock, Dax Shepard, Gary Vaynerchuk, Jane Fonda, Michael Bublé, Seth MacFarlane, and Vitalik Buterin were among the cast members.
the SEC charged SC2 with advertising NFTs as investments by asserting that the presence of well-known actors would raise their value. Over $20 million in secondary transactions were the result of 2.5% royalty SC2 got on secondary NFT sales. In retaliation, SC2 consented to an injunction, a $1 million civil fine, and a fair fund to compensate investors. They have not confirmed nor disputed the charges, but they have vowed to destroy all NFTs under their ownership or control. Live4, a new company with plans to enter the Web3 market, was recently revealed by Campfire, Japan's top crowdfunding platform. Live4 intends to use Web3 technology to introduce fresh community and crowdsourcing initiatives as well as new NFT and DAO services. By making this step, Campfire is using the rising popularity of blockchain technology and NFTs in order to broaden its product offerings and attract new clients in Japan and beyond. Live4's debut is anticipated to upend the crowdfunding sector and draw more investors to the Web3 domain. The daily trading volume on Ethereum for Friend.tech, a platform that lets users share and exchange digital assets, has surpassed an astonishing $12.3 million. For the third time in a row, Friend.tech has outperformed the Ethereum network's non-fungible token trading volume. NFTs experienced a $9.2 million trading volume on the same day. The increase in Friend.tech's trading volume demonstrates the cryptocurrency market's rising demand for digital assets and blockchain-based platforms. It is anticipated that the growing acceptance of NFTs and other digital assets would considerably aid in the expansion of cryptocurrency market. In the upcoming segment, we will update you about the following news. AI-powered microscope installed in Odisha's Malkangiri to detect malaria, Deutsche Bank to delve into crypto custody, tokenization with Taurus, OKX switch McLaren MCL60 race car to stealth mode for the Singapore Grand Prix. Stay tuned for more updates. An official said that the Malkangiri District Hospital in Odisha has installed a pioneering AI-enabled microscope on a trial basis. On 13th of September, it was officially opened at the hospital of Prafulla Kumar Nanda, the Chief District Medical and Public Health Officer for Malkangiri. He claimed that the AI microscope can accurately identify malaria. For better diagnosis, the microscope, created by a startup from the Indian Institute of Technology, Bombay, easily distinguishes between two malaria parasites, P. falciparum and P. vivax. The firms announced on Thursday that Deutsche Bank is collaborating with Taurus, a Swiss startup that specializes in Bitcoin storage, to provide digital asset custody and tokenization services. The largest lender in Germany, Deutsche Bank, said that it has submitted an application for a crypto custody license to BaFin, the country's financial authority, in June. The bank's plans for crypto asset custody have been known to the public since beginning of 2021, when information regarding a prototype for digital asset custody surfaced in a World Economic Forum study. The introduction of regulations for companies that hold digital assets in Germany, and more broadly, the proposed markets in crypto assets regulation framework in Europe, are giving traditional finance firms the clarity they need to investigate the market for digital assets. In a $65 million Series B financing that was co-led by Credit Suisse and includes Arab Bank Switzerland and Pictet Group, Deutsche Bank made an investment in Taurus in February. Lamine Brahmi, a co-founder of Taurus, noted that Deutsche Bank began investing in potential crypto custody companies around the end of 2021 and completed its investigation somewhere in 2022.
McLaren Racing and OKX, a Web3 technology company, have unveiled a limited edition stealth mode livery designed for the McLaren MCL60 F1 cars at the 2023 Singapore Grand Prix and 2023 Japanese Grand Prix. The livery, co-designed by OKX and McLaren, will switch McLaren's livery colorway from black to papaya trim, showcasing the brand's commitment to excellence, change, and innovation. The MCL60 was revealed in stealth mode at an exclusive media event in Singapore on 13th of September. The event was attended by OKX Chief Marketing Officer Heather Rafiq, McLaren F1 team drivers Lando Norris and Oscar Piastri, and McLaren Racing Executive Director Partnerships and Accelerator Matt Dennington. A limited edition t-shirt will be available through the McLaren store and giveaway for attendees of Token 2049, the Web3 conference. OKX will host a McLaren-themed fan zone, OKX Race Club, at Chismis, Singapore from 14th of September to 17th of September, featuring a stealth mode show car, racing simulators, giveaways, and surprise guests. That's all in the bulletin today. This is me, Vishakha Thakur, signing off. For more such updates, keep watching 3.0 TV. Do like, share, and subscribe to our channel and log on to our website www.3wordstv.io or scan the QR code. Franklin Templeton, the financial giant on the Wall Street, is the latest entrant in the race of launching Bitcoin's spot exchange-traded fund, which would hold the cryptocurrency as underlying asset and track its price. Franklin Templeton, which is one of the world's largest asset managers handling around $1.4 trillion, filed the application with the US Securities and Exchange Commission on Tuesday. The asset manager's application follows the SEC earlier this month delaying its decision on several such ETF applications, including from BlackRock, WisdomTree, Fidelity, and others. The product would be called the Franklin Bitcoin ETF and would be a series within the Franklin Templeton Digital Holdings Trust, according to the application. It added that its shares would be listed and traded on the CBOE BZX exchange and that America's largest cryptocurrency exchange, Coinbase, would be fund's custodian. San Francisco-based Coinbase has been chosen by other Bitcoin ETF applicants as the would-be fund's custodian and surveillance sharing partner. This means Coinbase would share information about trading, clearing activity, and customer identification to reduce the risk of market manipulation, as well as take care of the storage of the Bitcoin backing the fund's shares. Meanwhile, the SEC's next deadline to respond to an application is October 16th. However, it can again choose to delay. Sam Bankman-Fried, the founder of FTX, will have to continue putting up his case while inside after a US federal judge denied his request for a temporary release. In rejecting Bankman-Fried's several applications for a pre-trial release, Judge Lewis Kaplan found on Tuesday that the former FTX CEO was in a predicament of his own creating. After his arrest, Bankman-Fried was given a bond release. However, the Southern District of New York Court withdrew that release last month after concluding that the defendant had attempted to obstruct witnesses on at least two separate occasions. Two of Bankman-Fried's attorneys, Mark Cohen and Kristen Everdell, contended in both written submissions and a virtual hearing that he needed to have access to discovery documents that were primarily only available through online databases and to participate in a collaborative document outlining his work. The court expressed his skepticism in his ruling, stating that neither Bankman-Fried nor any other defendant has a right to review each and every item of provided information.
Defendant is represented by a substantial team of extremely able written lawyers, he wrote. Arguments that Bankman-Fried needed more time each day to concentrate on his defense did not convince him either. The court approved the request of the prosecution and defense for a September or October trial date. The trial is now scheduled to start on October 3rd, but the defense team has the opportunity to ask for a postponement, the judge said. According to two persons with the knowledge of the situation, London-based HSBC, one of the biggest banks in the world, is collaborating with Bitcoin custody technology company Fireblocks. Fireblocks has expertise dealing with major institutions and specializes in Bitcoin safeguarding technologies like multi-party computation. Early in 2021, BNY Mellon and BNP Paribas both chose Fireblocks as their custody technology vendor of choice. The regulatory ambiguity surrounding digital assets has tempered the large banks' excitement for cryptocurrencies. This is especially true given the scenario in the United States, where regulators are engaged in a legal battle with cryptocurrency businesses. Financial institutions in regions like Europe and Asia may have an edge over the American counterparts due to this lack of transparency. HSBC, which holds about $3 trillion in assets, lets customers of its Hong Kong branch trade in Bitcoin and Ethereum exchange-traded funds. In July, the HSBC-owned Hang Seng Bank, also in Hong Kong, stated that while approved crypto firms can create a bank account, they will only be able to receive a simple one. Despite this, the bank still appears to be somewhat wary about cryptocurrencies, at least publicly. That's it in today's special segment. For more such updates, follow 3.0 TV or log on to our website www.3versetv.io or scan the QR code to know more. नमस्कार, मैं हूं रुचि शर्मा। एनएफटी की दुनिया में पिछले कुछ महीनों से काफी हलचल हो रही है। सेल्स और ट्रेडिंग वॉल्यूम गिर रही है। ब्लू चिप एनएफटीज का फ्लोर प्राइस गिर रहा है, जो कुछ समय के लिए अपने ऑल टाइम लो तक पहुंच गया था। कई एनएफटी प्लेटफॉर्म्स शट डाउन हो गए और अब हाल ही में कई एनएफटी मार्केट प्लेसेस ने रॉयल्टीज ऑप्शनल करने का फैसला किया है, जिस पर जाहिर है एनएफटी कम्युनिटी ने विरोध भी जताया है। रॉयल्टीज को ऑप्शनल करने का ऐलान सबसे पहले नंबर 1 एनएफटी मार्केटप्लेस ओपनसी ने किया। अब ओपनसी जैसी मार्केटप्लेस जिस पर सबसे ज्यादा एनएफटी ट्रेडिंग होती है, ऐसा फैसला करेगी तो जाहिर है उससे पूरी एनएफटी कम्युनिटी पर असर तो पड़ेगा ही। लिहाजा सबसे बड़ी एनएफटी कंपनी युगा लैब्स ने ओपनसी को ही ब्लॉक करने का फैसला कर दिया। इसका ये असर हुआ कि हर महीने सबसे ज्यादा सेल्स वॉल्यूम दर्ज करने वाली ओपनसी ने पहली बार अगस्त के महीने में 100 मिलियन से कम की ट्रेडिंग वॉल्यूम दर्ज की। अब ओपनसी क्रिएटर रॉयल्टीज दोबारा जारी करने से तो रही, तो ऐसे में यूजर्स को फिर से अपने प्लेटफॉर्म पर खींचने के लिए ओपनसी 4 नए इंप्रूवमेंट प्रपोजल्स लेकर आ रही है और तो और एक्टिवली अपनी कम्युनिटी से फीडबैक भी ले रही है। साथ ही फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए कोलैबोरेशन भी कर रही है। ओपनसी अपने क्रिएटर्स को सेल्फ सर्व टूल ऑफर कर रही है, जो उन्हें अपनी एनएफटीज में रिडीमेबल क्वालिटीज ऐड करने की इजाजत देता है। ओपनसी ने फ्री प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट रिडीमेबल एनएफटीज रिलीज की हैं। तो जहां एक तरफ ओपनसी यूजर्स को बांधने और अट्रैक्ट करने के लिए रिडीमेबल एनएफटीज लेकर आई है, तो वहीं दूसरी तरफ महज महीने भर पहले लॉन्च हुई बेस एनएफटीज कमाल कर रही हैं। जियोन एनालिटिक्स के डेटा के मुताबिक बेस ने लॉन्च से अब तक के बीच करीब 1 मिलियन एड्रेसेस जोड़े हैं। इतना ही नहीं, बेस की डेली ट्रांजैक्शंस के आंकड़े ने पिछले हफ्ते आर्बिट्रम और ऑप्टिमिज्म को भी पीछे छोड़ दिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि बेस पर 68 मिलियन एनएफटीज मिंट की गई हैं, जिसमें से ज्यादातर यानी करीब 59.5 मिलियन ब्रिज टू बेस एनएफटीज थी। इथेरियम L2 पर पॉलीगॉन के बाद बेस चेन पर सेकंड हाईएस्ट एनएफटी एक्टिविटी दर्ज की गई है। ऐसी आशंका है कि आने वाले वक्त में बेस के नेटवर्क पर और ज्यादा क्रिप्टो और एनएफटी प्रोजेक्ट्स बिल्ड किए जाएंगे। इस खास स्टोरी में फिलहाल इतना ही। 3.0 TV को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।
India has a strong spiritual history dating back to the Vedic period, and as the world transitions from Web 2 to Web 3, it will definitely change the way we worship our deities. Yes, your pilgrimage tour to 4 holy sites, namely Yamunotri, Gangotri, Kedarnath and Badrinath in the metaverse will soon be possible, as temples are being recreated in the metaverse to allow God and his disciples to form a special bond through virtual reality. It will be one experience everyone wishes to cherish. The virtual pilgrimage is still a distant reality, but ISKCON Temple Dwarka has seized the opportunity early. It has established a metaverse experience for devotees. Live Abhishek ceremonies, soul-stirring aartis and virtual parikrama will be available in this virtual realm. Well, I have many more exciting updates for you from the metaverse space. Hello and welcome to 3.0 TV. I am Vishakha Thakur and you are watching a special show, Metaverse Magic. On the auspicious occasion of Janmashtami, ISKCON Dwarka Temple in Delhi, also known as Sri Sri Rukmini Dwarkadhish Temple, has introduced a metaverse experience for devotees. This digital endeavor, on the other hand, promises to create a one-of-a-kind and meaningful virtual link between devotees and the temple. Devotees in traditional clothes will be able to explore the premises, including the auditorium and guest rooms. Interestingly, people will also have the option of ordering prasad from digital restaurants in the metaverse. Well, the virtual world has a lot to offer, and the financial industry too is testing the waters of metaverse. State Bank of India has launched a metaverse experience called SBI Lifeverse. It aims to connect with the next generation of internet users, empower them and engage them, reshaping brand interactions as well as consumer engagement. Also, this platform allows users to create avatars and connect with diverse audiences. Users can choose from a variety of interesting avatars and showcase their creativity on the platform, allowing them to interact in real time. Well, businesses are foraying into the metaverse and are trying their best to engage with users. But the metaverse market is going through a turbulence. As of September 2023, the combined market capitalization of major metaverse tokens, SAND, AXS, ENRE and MANA has dwindled to a mere $1.23 billion, marking a staggering 92% decline from their peak. So let's listen in to what Mr. Andreas Band has to say about the decline in the market capitalization of major metaverse tokens. Yeah, so, is it, when it comes to the metaverse, is it the hype or is it hope? Some people might judge and verdict that it will be hope. But of course, the token market capitalization can be attributed to several factors. So firstly, the initial hype that we had, and there's also been done a lot of speculative investments in the metaverse. I think it kind of led into an unsustainable bubble, which eventually burst. That's how it normally goes. Secondly, I would say regulatory concerns and uncertainty around the whole legal status of virtual assets have negatively impacted investors' confidence, right? We have to remember that this is a new technology, and if there are some unlegal statuses around that can have a negatively impact on the investors. Next to this, there are technical challenges. As you see here behind me, I have a VR headset, right? Scalability issues, the technical challenges being that the headsets for, let's say, immersive experiences, they are a little bit cumbersome, they're heavy, clunky, so you wouldn't wear it for a full day out. But as we've seen with the rise of the mobile phone, the more we invest into the technologies, the more likely and better it becomes, definitely. And now an amazing update for all shopaholics. Flipkart has announced the launch of Virtual Worlds, an immersive virtual shopping feature powered by the metaverse. The new offering will be available on the Flipkart app with the goal of improving consumer experience and engagement. Virtual worlds are 3D rendered metaverse settings where platform users can interact with various companies and try out products. Well, as I mentioned, businesses are foraying into metaverse and are trying their best to engage users, and now Casio, a 77-year-old watch brand founded in Japan, wishes to leverage the growing buzz around Web3.
Yes, Casio's sporty G-Shock wristwatch series is making its way to the metaverse. On September 23, Casio will launch a set of 15,000 free-to-mint G-Shock Creator Pass NFTs in conjunction with eco-friendly blockchain Polygon. With its metaverse excursion, Casio hopes to capitalize on the growing hype surrounding Web3 in order to engage with a younger and more tech-savvy consumer base. Moving on, Nunori, a 19-year-old digital fashionista and metaverse avatar, is going places. She has worked with most of the top brands in the fashion industry and continues to wow consumers with her newly launched single, Dominoes. Take a look. Just a little push, that's enough to start a chain reaction. Well, the digital avatar with more than 400,000 followers on Instagram can be seen wearing a series of outfits, notably Kim Kardashian's Kim's line in the video. Interestingly, Warner Music Group has offered this first record deal to Nunori, and artificial intelligence technology was used to create the singing voice of hers. Also, the character's debut track Dominoes features 38-year-old German DJ and music producer Ale Fabian and was written by a group of songwriters and musicians. Well, that's all in this episode of Metaverse Magic. I will be back with more such interesting updates from the Metaverse space. Do like, share and subscribe to our channel, and for more such interesting updates, please log on to our website www.3versetv.io or scan the QR code. This is me, Vishakha Thakur, signing off. जस्टिन बीबर के फेमस ट्रैक की बनेगी NFT। बदलेगा NFTs का वक्त G-Shock वर्चुअल वॉचेस के साथ, और फूड वर्स में घुला बर्गर्स और रैप्स की NFT का जायका। हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जस्टिन बीबर के हिट गाने की NFT से लेकर बर्गर्स की NFT तक कई मजेदार NFT अपडेट्स मैं रुचि शर्मा आपके लिए लेकर आई हूँ। तो हो जाइए NFT वर्स के इस खास एपिसोड के लिए तैयार। इसमें आपके फेवरेट NFT प्रोजेक्ट्स की डिटेल तो होगी ही, साथ ही हम स्पेशल गेस्ट के साथ मुलाकात भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं पिछले हफ्ते कैसा रहा NFT मार्केट का हाल। क्रिप्टो स्लैम के डेटा के मुताबिक पिछले हफ्ते NFTs की सेल्स वॉल्यूम 6.75% गिरकर $80.69 मिलियन पर रही। NFT सेल्स वॉल्यूम में गिरावट लगातार 4 हफ्तों में देखी जा रही है। इतना ही नहीं, NFT ट्रांजैक्शन वॉल्यूम भी 4.33% गिरी, लेकिन NFT बायर्स के आंकड़े में 17.77% बढ़त देखी गई, जो 569,407 पर रही। NFT सेल्स वॉल्यूम में गिरावट लगातार 4 हफ्तों से देखी जा रही है। इतना ही नहीं, NFT ट्रांजैक्शन वॉल्यूम भी 4.33% गिरी, लेकिन NFT बायर्स के आंकड़े में 17.77% बढ़त देखी गई, जो 569,407 पर रही। हर हफ्ते की तरह इस बार भी इथेरियम NFT सेल्स में लीड कर रहा था। सितंबर के पहले हफ्ते इथेरियम NFT सेल्स 12.11% की गिरावट के साथ $42.61 मिलियन रही। NFT सेल्स की टॉप 5 लिस्ट में दूसरे पायदान पर थी माइथोस, जिसकी सेल में 25.27% की बढ़त देखी गई। 1% की बढ़त के साथ रही पॉलीगॉन, तो वहीं चौथे स्थान पर 5.58% की गिरावट के साथ थी सोलाना NFT। 5वें स्थान पर रही इम्यूटेबल एक्स, जिसमें 17.5% की सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं हमारे स्पेशल गेस्ट निखिल मात्रे का। NFT सेल्स वॉल्यूम पिछले 4 हफ्तों से लगातार गिर रही है। इतना ही नहीं, NFT ट्रांजैक्शन वॉल्यूम में भी गिरावट देखी जा रही है, लेकिन NFT बायर्स के जो आंकड़े हैं उसमें थोड़ा उछाल देखा गया है। क्या है इसके पीछे की वजह और इसका? Web3 projects were trading. With the surge in the collectors' interest,